Good morning, friends. It's great to see you after almost 2 years. As far as number of students are concerned, let's not talk about last 2 years because next 9 months are more important from the perspective of examination. So, I am C. Abhishek Zaware. I am a chartered accountant. I am not a graduate. So, you people could be BCom. I did not do the BCom. Fed up with it. Just CA. That's it. That degree also was taken back by the institute because of non-payment of fees of 436 rupees somewhere, which I paid, and they gave me degree back. So today I am a chartered accountant. Cannot comment about future. So you are here for intermediate. We are going to have a session of costing in the morning, 7 a.m. to 9:15, 9:30, 10, 10:30. So don't worry, 9:15 we'll have costing in the morning. You will have thereafter taxation. Thereafter, I'll come back for accounts and law. Whatever schedule was given to you, we'll be following the schedule as it is. I don't want to waste too much of time in giving some nonsensical instructions. I assume you are mature, you are adult kids. So there is no need of giving you instruction like beta notebook leke aane ka hai, pen leke aane ka hai, likhne ka hai. So that time pass is ignored. Your real journey for chartered accountancy course begins from today for majority of you. For some of you, it has already started when you joined Brahmastra batch. So we have a large number of students who already finished strategic management and a good chunk of financial management. But there are some students who have started new, or even there are some students who started earlier, but it is as good as a new start to them now because now they really feel they are in intermediate. Until now, they were doubtful whether they will be passing CA foundation or not. I'm teaching this subject for about 15 years. I'm dealing with virtually all subjects. There is only one subject in CA course which I have not taught so far. That is income tax. Virtually I taught everything, including audit, including indirect taxes also, when it was a VAT and a CST and service tax. And that was with the 76 passing percentage. 76.12 to be precise, approximately 10 years ago. So this time, my objective is 70%. With the inflation, the value comes down. So that's why 76 brought down to 12. Quality of students also, let's not talk about it. But 70% November 2022 or whenever you are going to give an examination, depending on your choice, this course is not the tough course. Majority of the people join up the chartered accountancy course thinking that यार ये तो मतलब tough course है, वो Google अपना idiot toughest course in India, CA course. That is basically because of some idiots or stupid people go out there on the internet and type it in the list of the toughest course. Obviously, I'm not saying it is as easy at 10th standard or 12th standard or your graduation exams, but it is definitely not as tough as what it is claimed to be. कि ये कोर्स तुमको हिला के रख देगा, ये कोर्स तुमको मतलब पागल बना के छोड़ेगा, लोग मतलब शादी करते हैं लेकिन सीए नहीं बनते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें आप सुनोगे. I agree that may be true for some cases, but it's not that difficult. Now you will say, sir, why are you making such a statement? Reason is very simple. You know what is there in the syllabus. You have enough time to prepare for it. It is not something that they're going to ask you about what is happening between Russia and Ukraine and what is going to be the impact of Russia attacking Ukraine on exchange rate between Indian rupee and US dollar, what is going to affect to the stock market. They're not going to ask such crazy questions to you. They're going to ask a typical question. Write a short note on features of equity shares. Write a short note on difference between cost reduction and the cost control, something like that. तो ये एग्जाम जो है ना
ये आउट ऑफ द सिलेबस या ऐसे कुछ खतरनाक चीजें कहीं से उठा दिए और डाल दिए, ऐसा नहीं है. I am from a village background. My father is a farmer. He was a primary school teacher, but since I have seen him since my birth, he's a farmer. My mother has learned up to 4th or 5th standard. She also doesn't remember. So I come from that particular background. It's very easy. I did not find a course to be challenging. My 10th standard passing percentage was 64. That was because there was some cricket World Cup at that time. And initially I liked cricket a lot. Then I realized, looking at your size, that this is not your cup of tea. So you should realize, thankfully I realized at much earlier age. Lot of people still in India believe that they are Amitabh Bachchan or Shah Rukh Khan and they go to that Instagram, Pushpa! Yeah, आजकल वो क्या तुम्हारा ऋषभ शर्मा को कल बोलते कच्चा बादाम. So kind of thing, without realizing that what is your truth. They try to hide away from the truth. See, if you cannot be, you want to do it for entertainment sake, I can understand. But if you're looking out that you are spending about 4-5 hours a day on that activity, like a core activity of your life, without understanding your core is chartered accountancy or a professional career, it's people who are misled. In my personal opinion, Instagram, Facebook, or these kind of applications are more lethal than the nuclear weapons. World is worried about what Russia or what Putin will do to Ukraine, and World War III will start. In my opinion, that has already started. Watch a social dilemma. There is a documentary on Netflix called as Social Dilemma. वो देखो, फिर तुमको समझ में आएगा. 1-1.5 घंटे का डॉक्यूमेंट्री है. देखने के बाद तुमको समझ में आएगा वर्ल्ड वॉर 3 कब का मतलब damage to the brains of the human beings has already been begun by Instagram or this kid called as Zuckerberg. And the similar kids. There's an innovation, everything is there, but my views differ. So this course is not as tough, basically because you do not have anything out of the syllabus. You have enough time to prepare for this particular course. You're given a foundation. Foundation was, okay, some people might have found it tough. Some people might have failed earlier in the foundation, now pass, and that's why you're here. It doesn't matter. Your past is absolutely irrelevant. In Chartered Accountancy course, frankly, how many attempts you take or how much percentage you score is not that relevant in my opinion. More relevant is how much skills you gather. आज आपके foundation में somebody could have scored, let's say, more than 300. We have about 38 students who have scored more than 300. Now some of them will be online, some of them will be here. How many are here? More than 300? Okay, a few here. Online public is also there. Good. So there are a lot of students. So it doesn't really matter whether you have scored 200 or 370 or 400. 400, nobody will be there. It really doesn't matter. Your skills, your capability to deliver the knowledge or what you understood, withstand the pressure, stress, that is what going to matter in the field of chartered accountancy. I said your real journey begins now because so far till foundation you are exposed to some minor issues, could be your typical financial accounting issues or some basics of law you learned. Mathematical calculations you did, but you did not have an application of it. You learned correlation regression without knowing where to apply it. You did a correlation regression with what? X and Y, right? That X has become X now. In case you understand, you can laugh also, you are human beings. So you learned that correlation regression with X and Y. You did not bother to ask a question, what is truly that X and Y? So now you will find a true meaning of it, or you will find a true love for it. The same X and Y regression coefficient I can use for the purpose of bifurcation of semi-variable cost into variable cost and a fixed cost. भाई साहब बोल रहे थे finding beta. बेटा हमको बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, एक एग्जाम्पल नहीं देते हम. So ग्रुप 2 में उसने रिग्रेशन का एक एग्जाम्पल किया था बीटा फैक्टर करके, उसको लगा भी मैं वही एग्जाम्पल दूंगा, अलग अलग चीजें आती. So you will learn regression. The same regression, y equal to mx plus c, I'll help you to dissect the cost of a company into variable and into fixed.
From that, we'll link it to how do I find a break-even point? How do I find something called the margin of safety for a company? How do I do the predictions for the future profit for the company? How do I estimate budgets at a different capacity utilization level for a company using same regression coefficient that you learned? But in foundation, you could have done a typical formula. Regression is equal to summation of x minus x bar, something you could have done, or regression is equal to correlation coefficient into standard deviation of x upon standard deviation of y, byx, bxy. I'm not going to take you even there. Without teaching those formulas, I'll explain you how to apply. Now, majority of you, how many had calculated regression in the Brahmastra batch? Slope, beta factor मैंने explain किया था, सब पूरा working करके दिखा था actual data पे. Oh, good. Good number of people have worked out already. Did you find it difficult? What was it? It was just one single function called as a slope. So it was that damn easy. So why I'm saying chartered accountancy course is not that tough? I did not say it's very easy. I said it's not tough as it is claimed to be. The reason is you're not understood the true meaning of the concepts. If you spend a little bit of time to understand the true meaning of the concepts, my friend, this course will become extremely practical to you. You will start loving the course, you will not hate it. What I've seen majority of the students failing is because they have not developed a love towards the entire course as such. Why passing percentages are low? You would have heard that CA course passing is how much? 3, 4, 5%, right? That is what you would have heard. Is it truth? Is it a truth? Answer to that is yes. Again, you have not understood a concept called as a joint probability, which was there in the CA foundation. Whatever 4 or 5% you see or you hear from the social media or newspapers or your parents, or could be your relatives maybe, who aspired to become a CA but could not complete, or their kids aspired, could not complete, and that's why they are saying to you that you should not do it because 4 or 5% result is there. How is that 4 or 5 calculated? Foundation, how much was your result? 30.2% was a result in which the exam in which you passed. Inter could be approximately all India ICA percentages, 20-25%. Final is 15-20%. So how is this 3-4% calculated, and which is used to scare the students, and which is used to bring the students to classes and scare the students again and again, revision batch, amendment batch, and this batch, that batch, do it. That is used to scare. This is unfortunately the truth of selling anything. You first create a fear and then you try to, what see people say, 100 students join, foundation 30% will pass, so 30 pass. Joint probability is what? Multiplication of 3. Probability of passing foundation into probability of passing inter into probability of passing final. So if you take on your calculator 100 into 30%, so remains 30%. 30% students pass CA foundation into around 25% inter. ले लो आप 25% ले लो इंटर का, कितने आगे 7.5, उसका 20% ले लो फाइनल 1.5. That is the passing percentage. That is what media will tell you, and that is where people get scared, and that is where they go to Google. See, this is the toughest course. What these people do not understand is, if you do not clear in the first attempt something, it does not mean that you are given up. It does not mean you are given up. The first match, Sachin Tendulkar went and let's say got bowled on 0. I don't know. Or a batsman gets out on the 0 in the very first match. Does he leave the cricket game? No. He does not leave the cricket game. The first match you went and you lost. नहीं नहीं हम खेलेंगे नहीं अभी. ऐसा थोड़ी होता है. So there are multiple attempts which are given by students. Maybe foundation, multiple attempt, inter or final. If I consider all of that roughly, I have the actual data and the statistics with me. Approximately all over India, out of 100, 20 to 25 max become CA. 70 to 75, or let's say remaining number of students don't become. Now why? That why, if you understand on day 1 of intermediate, it's very important. That why, broad reason for it, students do not develop love or liking towards the course.
They are doing the course because either parents ask, or you chose the course, or you came to commerce, you have no option, that's why you started doing it, or your friend or friendie started coming to CA course, that's why चलो मैं भी चलता हूँ friend के साथ या friendie के साथ, as the case may be. ऐसा majority of the students just doing it for the sake of doing it without really trying to understand कि बॉस ये मुझे कुछ सीखना है. बहुत सारे लोगों ने पढ़ते टाइम पे कोसा होगा चीजों का, फाउंडेशन के अंदर कोसा होगा, यार मैं क्या कर रहा हूँ यार. मैथ्स पढ़ते टाइम पे तुमने बोला ये क्या डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है, या उधर लेक्चर अटेंड नहीं किया अगर डेरिवेटिव, चलो मैं ऑप्शन को छोड़ देता हूँ. इट वॉज बेसिकली बिकॉज यू डिड नॉट कम अक्रॉस विथ वॉट, you did not come across with the true concept, or you did not come across with Abhishek Zaware. The same derivatives, if you try to understand, forget about d by x or dx upon dy. I will not do the derivative of x upon y. What I will say? I will say there is a debentures which are traded on the stock exchange, or there are bonds of government of India which are traded onto a platform called as 𝐾𝐽. कुबेर धन की देवता थी ना, तो वहां पर डिबेंचर्स है या गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है, उनका प्राइस है. दिस प्राइस इज डेरिवेटिव ऑफ, दैट इज इट डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी. इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी डिपेंड ऑन inflation in the economy. So if I say inflation as it changes, that is a price level as it changes, interest rates in the economy undergo a change, and that interest rate decide the price of a debenture. How? There is a formula. Those who have done the group 2 will recollect somewhat. The price of a debenture or price of a bond is dependent on expected rate of return. So the expectations of investors do decide the price. So price is what? Derivative of expectations. So there is a link. So then I start developing the various properties of the derivatives. So you will find out that the derivatives itself is not boring. So using the same derivatives that you learn as you progress in the CA course, let's say somewhere in the CA final, you will understand how changes in inflation affect prices of debentures directly using a formula of same derivatives that you would have learned. First degree derivative, second degree derivative you could have learned, right? Maybe in 12th standard, maybe in foundation, wherever. So now the same example, if you like, and you take up, you will find out the chartered accountancy course is much more interesting. You will develop the love towards it, you will develop a liking, and then managing the content of the course becomes easy. If you had already registered with the institute, you would have received the study material from the institute by now, maybe. How many received the material from the institute? Study material? No one? You did not order? So you ordered, it is in transit. Okay. Once you receive, I think ये मैडम की हाइट तो चली जाएगी उसमें पूरे बुक के से थोड़ा, या मंथन तू तो चला जाएगा मेरे हिसाब से, ऐसा भी और ऐसे भी. It is basically size of the course which is huge. आप ICA के बुक्स दोनों ग्रुप की आप रिसीव करोगे ना, तो यहां से ऐसे बुक्स रखोगे तो यहां पर कहीं तो यहां तक आ जाएंगे आपके all the books. हाँ, depending on whether you are ordering both the groups and that ITT study material together or not. Information technology नहीं, वो तो नहीं देंगे अभी, मेरे हिसाब से वो बाद में देंगे तुमको. So even if you get your books, सिर्फ यहां तक तो आराम से आ जाएंगे बुक्स आपको. वो कुरियर वाला घर पे नहीं आएगा, कुरियर वाला तुमको कहीं दूर से बुलाएगा. क्यों? उसको समझ में आएगा कि इतना सारा बुक्स एक घर पे लेके जाना है यार. तुम्हारा फ्लोर अगर 10-20वां फ्लोर है तुम्हारे बिल्डिंग में और लिफ्ट वाला अलाउड नहीं है, लिफ्ट बंद है उधर, वो तो आएगा ही नहीं तुम्हारे घर में. What is it? Is it the content of that entire module or the course which is extremely tough, which is not capable of being understood? ऐसा नहीं है. वो कंटेंट जो है ना उसके अंदर का, वो इतना आसान है, इतना अच्छा है, बहुत सारा, मतलब 100% नहीं बोल सकता मैं. A large chunk of the content that you are going to learn in the CA course is relevant, is practical, is capable of being understood in a very, very easy manner if you can correlate the things to something happening in real life. It's very easy. So उस content को आपको digest करना है. Size of the course, not the difficulty level. तो जो 1-2% आप देखते हो यार 20% बच्चे पास होते हैं और बाकी फेल होते हैं, देखते हो ना, वो बाकी फेल होने वाला बच्चा जो है ना, उस कोर्स को कोसते रहता है, मैं क्यों कर रहा हूं ये. तो आज से क्या नहीं करने का है, कोसने का नहीं, मतलब यू डोंट हैव टू,
You are not supposed to blame the course. If you have decided to do the chartered accountancy course on your own, do it with the proper insights, proper understanding, and if you can link it with the real life, or you can link it with the lot of related examples, let me tell you, this will give you a lot of inputs, lot of happiness also, more importantly money also. If money defines a happiness for you, which is the case for majority of the public, unfortunately, this course will give you a passport to any country you want in the world, excluding Pakistan. So there you should not go, in my opinion, even if you get a job there. So with the due respect, I'm nationalist, no doubt about it, but it's not the same as the nationalism proclaimed by the ruling party. So number one, it will give you a passport. So you want to go to any country, this course has that particular potential. This degree, on the basis of the chartered accountancy degree, you can get a job virtually in any country. Obviously you should know the language, English, and you should get a visa that is there. Like, you may not get a US work visa right now in the very first year after becoming a chartered accountant, but you add some skills to your profile, you do some more work, it will give you opportunity to US. आप बोलते सर नहीं मेरे को सदाशिवपेट ही चाहिए. It gives you opportunity in Sadashivpet also in Pune. This is a course which has no geographical limits, no industry limits. तुम डॉक्टर बन गए, तुम हॉस्पिटल में जाके काम कर सकते हो, होटल में जाके काम कर सकते क्या? हाँ नहीं ना. फुल टाइम होटल के अंदर डॉक्टर, उनका जो डॉक्टर रहता है वो बहुत लोअर लेवल का रहता है, दैट इज ऑल्सो नॉट फुल टाइम, वो विजिटिंग रहता है. So if you become a doctor, you don't get an opportunity to work in what? A different industry. You have to work in a hospital only. You cannot go to hospitality also. You are a chartered accountant. Tell me a sector where a chartered accountant cannot be employed. Tell me a sector where financial service professional cannot be employed. You become an engineer, chalo, bahut bada scope ho sakta hai depending on type of engineer, but you are a civil engineer, you will construct buildings only, or you will be restricted to a large extent to a particular sector. Financial services, yes, ये ऐसा degree है जो ऐसा option है आपके हाथ में, which allows you to go to any industry, any geography at any point of time in your life. So like, even if you take up or you go on doing a business does not work for some reasons, you want to go and do a job after 4-5 years, you can do that. You did a job for 4-5 years, you got bored, you want to go into business, you can do that. You can always do that, anything to anything. You have a huge options. आप आजकल वो शार्क टैंक देख रहे होगे, कितने लोग शार्क टैंक देख रहे हैं? अभी वो सीरियल के बाद थोड़ा मुश्किल है नमिता को यहाँ पे बुलाना, बट नमिता मेहता, नाउ नमिता थापर, who would have seen on the Shark Tank? You saw the Renal project? How many saw Renal project? Renal project 1. Renal project I had invested in 2020, which Shark Tank made an investment about 5-6 days ago. It's a dialysis center. I am a chartered accountant. Do I understand ABCD of dialysis? Answer is no. Looking at me, question doesn't arise. But I can't show you complete things. Financials तो नहीं दिखा सकता तुमको. हाँ नहीं, it's a confidential ना. Renal project. This is घर पे Zoom वाला पब्लिक दिख नहीं रहा तुमको. This is the Renal project. The Renal project wherein the Shark Tank invested the amount of money. So this was somewhere in lockdown, December 2020. So as a chartered accountant, you have the scope of going into pharmaceuticals. Namita Thapar, who runs now, let's say among top 10 or top 5 pharmaceutical companies of India, I'm not saying world, is a chartered accountant. आप बोलेंगे हैं? Pharmaceutical company run by a chartered accountant. Answer is yes. आंसर इज यस. आप बोलेंगे कैसे? उसको ऑपरेशन करती वहां पर? नहीं, कुछ नहीं करती, कुछ नहीं समझता उसको ऑपरेशन के बारे में या मेडिसिन का R&D के बारे में. बट व्हाट यू गेट टू नो फ्रॉम दिस चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स इज अ ट्रू स्पिरिट ऑफ व्हाट? अंडरस्टैंडिंग बिजनेस. इफ यू डेवलप दोज स्किल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम,
And the intermediate is real journey to start that. Intermediate, your articleship of 3 years and thereafter CA final. You take a due efforts बच्चों, बहुत बहुत अच्छा कोर्स बनेगा तुम. नंबर 1 in terms of I told you money. नंबर 2 geographical limits कोई नहीं है, सेक्टर के लिमिट्स कोई नहीं है, बिजनेस करना है, जॉब करना है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. You get analytical capabilities. But unfortunately, those 80 students, they look for short-term enjoyment. Short-term enjoyment versus long-term loss. Majority of the students, while doing the CA course, they look at मेरे को just खत्म करना है यार इस कोर्स को. मैकेनिकल तरीके से पढ़ता है, रट्टा तरीके से पढ़ता है, उनको फन चाहिए, उनको मतलब टीचर ऐसा चाहिए कि हर बार आके तुमको हंसाते रहे, कुछ तो ऐसा फालतू का टाइम पास करते रहे, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस ना करे, मतलब मेरे को पूरा तुम एंटरटेनिंग क्लास कर दो बस. That should not be the objective. If you learn the concepts can also be entertaining. Like as we progress ना, regression तुमने सीखा होगा ना, मैं तुमको regression का same use तुमको bifurcation of cost में दिखाऊंगा तुमको. And then you can analyze financial statements of some company and bifurcate the cost between variable and fixed, and then you can go on doing a lot of analysis. Those who were in Brahmastra batch, if you remember, we were taking a data from Tijori and trying to bifurcate the cost into variable and fixed. At that time, I did not explain that concept because it is in cost. So if you start giving a time, you will really see the concepts that are used in reality coming in front of you like this. It is your choice whether to take it or not. Trust me बच्चों, अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे ना, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत कम होगा, not on day one, as you progress. And I had done that, and that is why I can take a challenge on a bond paper. If you want to write, I am ready to give a, let's say, bond paper of 1 lakh rupees per student. I will prove passing percentage of 70% for a batch, not an individual student, obviously. वो उस दिन वो गए नहीं एग्जाम को 1 लाख रुपए लेने के लिए, मैं क्या करूं यार. So 70% which is possible, provided you do certain things. You have to follow the instructions as they are. I will not allow the deviation. It is not like I'm going to ask you, चलो दिन के 5 घंटे 10 घंटे पढ़ो. नहीं, the manner in which you study, that is more relevant. It is not number of hours. Somebody may digest in 5 hours, somebody may digest in 2 hours. That's okay. So if you are not in a position to digest in 2 hours, you give 4 hours. Huh? You will also come across at the other level. You will also come across. It's not like, I remember when I came to Chartered Accountancy course, my English was pathetic because we learned English in Marathi. We learned English in Marathi. There was no option. What can I do? We did not have you had English right from the first standard or junior KG. Our introduction to ABCD was in the 5th standard. So in our days, there is no English in the initial 4 standards. No, it was local language, mother tongue. And I am proud of it. There is absolutely no problem that if you are studied everything in Hindi so far, or Marathi or Tamil or any language you learned so far, it's okay. What is important is you have developed expertise, you have developed a confidence, understanding. Now, for a Chartered Accountancy course, you require what? English. Hindi medium का भी option है. तुमको लिखना है पेपर सीए कोर्स के हिंदी में, ऑप्शन है, बट वो इंग्लिश से 5 गुना ज्यादा डिफिकल्ट है. क्यों? तुम कभी आईसीआई का वेबसाइट खोलो, फाउंडेशन का ही पेपर खोलो तुम, और वहां पर, या आपने इनकेस यू सॉ द क्वेश्चन पेपर्स, वहां पे पीछे हिंदी का पेपर भी रहता होगा. इनकेस इंस्टीट्यूट प्रिंट्स बोथ. कुछ नहीं आ रहा ना पेपर के अंदर, वो हिंदी का पेपर देखते जाओ, थोड़ा हंसी मजाक आ जाएगा और तुमको फिर लगेगा ये इंग्लिश आसान है. सो हिंदी टेक्निकल वर्ड्स आर कॉम्प्लिकेटेड, very very complicated. Like I don't know what is cost accounting in Hindi, so you can't say cost accounting or in Hindi. You have to write something. I don't know. So you have to improve on English out there. आज आपका English अच्छा नहीं हो सकता, over a period of time अच्छा बनेगा ना. Why are you imagining that whatever is your level today will be the same level after 1 month, after 2 months, after 8 months, after let's say 1 year? There will be always improvement, na? Human being is always going to improve. What I used to teach 10 years ago, what I am teaching today, and what I will be teaching 10 years down the line. 10 years down the line, I cannot predict. It's tough. But there is a huge difference. Every human being improves. You imagine yourself. Those who are with 𝐴𝐸𝐴 in the foundation, you imagine your brain levels on day 1. You imagine your brain levels today. You imagine brain levels when you started to Brahmastra batch and today. Or you measure your brain levels today and tell me on last date. Somewhere in the last week of the July or first week of the August, somewhere. You will find out a huge change, but for that change, you have to be
patient. That change cannot happen. चलो बच्चों मैं कोई जादू की झड़ी करता हूं, ऐसे ऐसे करता हूं, चलो 9 बजे तक तुम लोग पूरे स्मार्ट बन गए. नहीं हो सकता ना. You have to give a time to it. And that timing, if you give it, you will find out course interesting. 80% जो बच्चा फेल हो रहा है ना, वो इसी की वजह से फेल हो रहा है. उसको यही नहीं समझ रहा है कि मैं शॉर्ट टर्म एंजॉयमेंट देखूं या लॉन्ग टर्म एंजॉयमेंट देखूं. यू वांट अ लॉन्ग टर्म गेन. नोबडी इज हियर for the entertainment of 5-6 months, or let's say, tell me, when you will cherish your memories of foundation, inter or CA final or CA course. You'll normally cherish the memories when you pass out successfully. Even if you fail, you can cherish, because depending on what was type of memories. Could be. But everyone wants here, nobody has come here with the intention to fail. Everybody wants to pass. But I think that just getting obsessed with the passing, instead of that you focus on the journey rather than getting obsessed with that result or the outcome. Get obsessed with the journey of 5-6 months here. 6 months we'll have coaching there. After 2 months, because of big batch started late, you'll have 2.5 months for the self-study. 6 months of classroom trainings, 2 months of self-study. It's decent enough for the purpose of clearing your entire intermediate in the first attempt with both the groups. And that I am saying, I can take a challenge for 70%. 1 lakh rupees ka challenge tumko dena padega. If you fail, I will give you 1 lakh. If you pass, you have to give me 1 lakh. Obviously, in addition to the fees that you already paid. Obvious hai. I can, because I had done that in the past, but the only difference that I am seeing is students used to have a blind faith, trust. And that trust is somewhere, I am seeing trust, could be respect, could be just belief in some system as such. That belief is gone from a human being. It's not only for the student, it's everywhere. I am saying in general, public in general, due to the social media or due to the advent of lot of information to you, you don't really follow one system, like whether it could be medicine, like you take a medicine, doctor gives a medicine. I see a lot of people still going onto the Google and trying to search what that medicine is for, whether that medicine really suits the purpose. Then why did you go to that particular doctor if you do not have the trust? How many did that? Honestly, tell me. Honestly, hai banda hai. So kya medicine hai? So if you are doing it from the point of view of knowledge, कि ये tablet किसके लिए है, ये medicine किसके लिए, then it is okay. But if you are doing it from the point of view of like, ये डॉक्टर सही है कि नहीं यार, मेरे को चेक करने दो, या बहुत सारे लोग नहीं, सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए, सेकंड ओपिनियन, बट वहां पर क्रिटिकल केसेस में तुमको सर्दी हो गई, नहीं सर डॉक्टर ने ये मेडिसिन, और एक डॉक्टर का डॉक्टर और सर्दी हो गई मेरे को. CA course is like that. It is not something where you require a second opinion. You just follow a particular path. That path will lead you to the good, decent success. So I just want, sir, even Aman Gupta is a chartered accountant. Yes, I know Shark Tank has a lot of chartered accountants. So we'll have some session with Namita. Now she has become a huge celebrity. She's busy with the IPO of the company. MQR is going to be listed in a matter after LIC comes up. Their IPO was supposed to come on the 2nd of February. Some reasons stopped it. There is something called as Income Tax Department with the Government of India, which can change the things overnight by doing variety of things. That you'll understand the reality as you progress. So my simple and honest request to you on day 1 of your intermediate is please start understanding the concepts from the sake of learning them, not just from the sake of passing that particular examination. If you learn them, you understand the true spirit. Volume of the syllabus is capable of being managed easily. Like now, for example, for costing, just to give you a volume ka example, let me just bring up the book on the screen. कितना वॉल्यूम है तुमको? ना तुम रट्टा मारना चाहते हो ना तुम लोग, या तुमको याद रखना है ना तुमको? मैं तुमको जस्ट एक हिंट दिखाता हूं क्या है. How much is this worth? I'm just showing you for what? Costing. मैं उसके बाद जाऊंगा. So we have 2 books, concept book and a class book. This is a class book. Class book has all the questions without answers. So if you see the intermediate index,
for the costing subject. There are 4 categories of chapters in the costing. Section A, B, C, D, weightage is given. What is important? How many questions are you supposed to solve? Number of questions, practice problem. There are multiple series of questions that we have. P series, then past exam series, ICI RTP series, ICI MTP series. Past practice problems, we have 492 questions. ICI exam, just last 4 years, 2018, 19, 20, 21, बस पिछले 4 साल का 143 questions. This is after avoiding repetitive questions. 68 from RTP and 80. Somebody can take a total. इसने ले लिया 783. 783 fucking problems. Are you going to remember them? Are you going to remember the questions, answers? You can if I reduce, let's say, number of problems to 200, something like that. If I can reduce let me tell you a golden secret of a teaching industry. Reduce number of questions. Ensure repetitive questions. You do a question in class. Similar question you give it for what? Homework. Figures you change, multiply by 2, divide by 2. Give the feeling to the students when they are in the class that they understand bloody everything. They understand everything. But when they go out to the examination, they get some googly out there. Googly ऐसा होता है? ऐसा होता है. We are going to have cricket matches also, so I'm learning what is this and what. So, whatever, majority of the students, unfortunately, do lesser number of questions with lesser variety of problems, and then they go to the examination, and then there is some different variation that the institute is capable of creating very easily, and then they fail. Then they fail because you are practiced onto a certain set of problems which you are tried to remember. If the question comes like this, I have to give a solution like this. Or there are formulas, like there are so many chapters where there are formulas. You just try to remember those formulas. You have never tried to understand the true application of the formula. You never tried to understand the true application. And then, obviously it is not possible. This is a situation of what? One subject. I just showed you costing. This is not entire intermediate. One subject for 100 marks. Similar will be the position in what? Accounting. Accounting will be lesser. Let's say something around 400, 500. So these many number of questions, this much a size, this is a volume. But अगर मैं आपको बोलूं इसके अंदर ये सब कुछ, आप बोलेंगे सर कैसे याद रखना है? Trust me, one day के अंदर I can finish up everything after all 3.5 months are over. Those who have done the FM and they did revise, कितना? We have finished almost 40 marks of FM out of 60 marks. कितना टाइम गया है तुमको बड़े बड़े चैप्टर खत्म करने के लिए? अगर तुमने खुद घर पे रिवाइज किया होगा, मैंने मैसेज तो दिया था. Chapters could have been right now maximum 1.5 day you could have revised. Chapters where I spent, like leverage chapter, I would have spent about 15-20 clock hours in teaching that. Could be managed in matter of about 15 minutes to 30 minutes from exam perspective, because you understood the in-depth concept. So when you do a in-depth understanding of the concept, later on bringing it to a shorter version is very easily possible. Remember one scientific study. If a human being reads 100 pages, what is the probability that he will remember 100 pages? 0%. There is no human being who can recollect everything. But out of that 100, you can remember 25 at least, not pages literally, but content of about 25 pages. So why to study lesser? Like when I'm teaching material cost, I can give you about, let's say, 6-7 formulas, and on that I'll give you 6-7 questions. चलो 15 questions मैं आपको यहाँ पे लिख के दे सकता हूँ. ये 15 questions तुमने किए ना, यहाँ पे 15 questions है ऐसे variety के हर एक type के. You can pass the examination, provided the paper comes in the similar fashion like what it is to be. But मैंने अगर उस material cost का linking तुमको standard costing में material cost का variance calculate करना है या variance calculate करना है, उसके टाइम पे करने को बोला, you will not be able to do it when you just do it from exam perspective. So I'll have to require that linking of material cost in a chapter of standard costing, in a chapter of budgetary control. बच्चा करता ही नहीं ना उसको. बच्चा बोलता है वो चैप्टर है ना, अभी मेरे को ये पहले क्वेश्चंस खत्म करने दो. तो यहाँ पे 50 क्वेश्चंस है, उसमें से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस
जो लिंकिंग के लिए क्रिएट करके रखा है. सो आई कैन इट कैन हेल्प मी इन अंडरस्टैंडिंग द अदर चैप्टर. सो आप टाइम को बहुत क्रैश डाउन कर सकते हो. एक 24 घंटे के अंदर आपको हर पेपर के लिए पढ़ने के लिए कितना टाइम मिलने वाला है? 24 आवर्स. कॉस्टिंग इज व्हाट? योर पेपर नंबर 3. पेपर 3 है कॉस्टिंग. यस. सो पेपर 1 इज योर accounts. You will have 1 day holiday, law thereafter, and thereafter you'll have what? Costing. You'll have 24 hours after law paper for a costing paper. Every paper you'll have 24 hours except accounts. Accounts all time is yours until that. So 24 hours के अंदर आप सब्जेक्ट खत्म कर सकते हो या नहीं कर सकते? That is a important question. आप trust me. Like we are starting. What is the date today? 21st of February. Most probably we'll try by 31st of May. Sunday we'll be having all holidays. Don't worry. Sunday you can relax with the tests. आपने टाइम पास भी करना चाहिए जिंदगी में, लेकिन वो टाइम पास करना क्वालिटी टाइम पास करो. वो इंस्टाग्राम पे मत करो. मम्मी पापा से बात करो, भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए. क्वालिटी चीजों के ऊपर टाइम पास करो. तुमको डांस पसंद है, डांस करो. तुमको फुटबॉल पसंद है, बाहर जाके खेलो. पबजी मत खेलो. या वो तो क्या बोला था उस दिन मेरे को? What is it? Call of Duty. Call of Duty. Call of Duty खेलना है खेलो, लेकिन कॉल ऑफ एक्चुअल में जाके भी ड्यूटी करो. कुछ कपड़े धो, कुछ बर्तन धो. हाँ, इट कुड बी द फुटबॉल. मम्मी के साथ बात करते करते बर्तन धो दिया तुमने, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी कर लो तुम. वट एवर गिव्स यू अ जॉय, यू डू समथिंग. इट्स नॉट दैट यू हैव टू बी एडिक्टेड टू द बुक्स ओनली. सो वॉल्यूम है सीए कोर्स के अंदर बच्चों, मैं उस वॉल्यूम को कम नहीं कर सकता हूं. इट इज नॉट पॉसिबल टू रिड्यूस डाउन द वॉल्यूम. आप कॉन्सेप्ट्स के पीछे भागो, ऑटोमेटिकली सब चीजें आपके रोल में आएगी. आई कैन गिव यू विद द वो जो 70% 76% में रिजल्ट हो ना, वो सब चार्टर्ड अकाउंटेंट. आई कैन गिव यू देयर मेंबरशिप नंबर. क्यों? मैं इलेक्शन जब लड़ा था ना, मैं अकेला आदमी हूं ऐसा जो 5 मिनट के लिए मतलब कैंपेनिंग, मतलब 5 मिनट पहले इलेक्शन के डेडलाइन के पहले फॉर्म भरते हैं, जीत के आया था. सो only one fellow. Nobody was knowing I was down with the chicken pox. Some students had gifted me that time chicken pox. I was in hospital, so nobody thought that I'll so हॉस्पिटल वालों ने डिस्चार्ज दे दिया. 5 मिनट पहले जाके मैंने फॉर्म भर दिया. बच्चों को, ए बैच को बोला कि भाई मैं इलेक्शन लड़ रहा है, माई टर्म विल बी गेटिंग ओवर. इट वाज सपोज टू गेट ओवर डे बिफोर yesterday, बट some ICS central council member expired day before yesterday, and that is why they extended the term for 4 more days. So next, I think this Thursday or Friday, my term will be over. So my stint with the ICI is done. I am not interested in doing any further. I understood that system doesn't work for me. It isn't. But those students are chartered accountants today. There are about 3 students whose salaries are above 1 crore today. 3 whose salaries are above 1 crore, passed out in 2012. In matter of 10 years. One of you interacted also in Brahmastra batch, in case you remember. The treasury head of the PhonePe. PhonePe मालूम है? He's a treasury head of the PhonePe. You understood the transactions, the kind of transactions that he manages and the scale that you try to achieve. So अगर किसी का बीकॉम वगैरह एग्जाम हो सकता है बीच में, तो आप जाके बीकॉम का एग्जाम दे सकते हो. ऑल द बेस्ट है बेटा. कौन सा पेपर है तेरा? बैंकिंग. Tell me whether SBI is a nationalized bank or a private sector bank or a public sector bank. Nationalized, private sector, public sector. SBI is not a nationalized bank. That is where you need to learn. There is somebody who said nationalized bank the moment I said, who was it? कहीं तो आवाज आया था nationalized bank, honestly. It's okay, it's okay. That is what a typical traditional system will teach you, because you are not trying to understand what Indira Gandhi did in nationalization. This nationalization act was there. SBI was not nationalized, it was already there. There's a difference between nationalized bank. Many people think it's okay, quite normal. We'll learn concepts like this in the economics or finance. So, my point to you is, you have a tremendous scope. आपको पैसा चाहिए, आपको फॉरेन जाना है, आपको अलग अलग सेक्टर्स में जो कुछ करना है. योर ऑब्जेक्टिव्स कुड बी एनीथिंग. यू माइट नॉट हैव एनी ऑब्जेक्टिव राइट नाउ. यू माइट हैव ऑब्जेक्टिव, सर मेरे को सिर्फ पास होने का है सर. वो प्लीज मत रखो, बिकॉज दीज आर इन माई ओपिनियन द मोस्ट फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ योर लाइफ. नेक्स्ट 2-3 years
ऑफ योर करियर, मोस्ट फॉर्मेटिव इयर्स, बिकॉज आप जो मैं आपको एक ऑनेस्टली बोलूं, आज के 10 साल के बाद मैं तुम्हारा ऐसे क्लास यहां पे लूं, तुम सुनोगे नहीं मेरे को. क्यों? You would have started forming your own opinions about the life by that point of time. Today it is a clean slate. You are open to different ideas. Try to grab as many ideas as possible, and then you decide what could be the course, future course of path. Could be business, could be job, could be anything to anything. But try to grab different points of view. That is your learning phase right now. And if you practice intermediate properly, get through it, you have a scope of getting into much larger firms for the purpose of articleship. You could start earning an income. And let me tell you, your entire cost of chartered accountancy course will be recovered during articleship itself, provided you do it with the skills, because your stipend could be about 2x higher or 2.5x higher than the average students if you do with the skills. स्किल्स आप रखो, स्टाइपेंड ज्यादा होगा, सैलरी तो मतलब बात का तो पूछो ही मत. इट कुड बी इंटर बॉल गेम कुड चेंज, बट उसके लिए आपको क्या करना है, समझ लेना है. सो विद दैट बैकग्राउंड, लेट अस किक ऑफ विद द सब्जेक्ट. आई टोल्ड यू माय नेम, राइट? आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट? सो यू हैव टू लिसन टू मी. सो वी आर स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल. इंस्टीट्यूट कॉल्स इट एज cost and management accounting. We'll come down. What is costing? What is cost accounting? What is management accounting? Everything will come down to it. So, मैं फालतू वाला इंस्ट्रक्शंस तुमको कुछ दिया नहीं, तुम तुम्हारे हिसाब से जो करना है वो करते जाओ. या थोड़ा बेसिक देना. एनी डाउट यू हैव, आई विल से डाउट, तब जाके टाइप करना. सुदर्शन गारगटे जी प्लीज, आप जितने सारे डाउट, हाँ थोड़ी बेसिक चीजें बोलता, बिकॉज देयर कुड बी सम स्टूडेंट्स हु आर न्यू. जितने डाउट पूछने आराम से पूछ सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं. डाउट के लिए पैसा नहीं लगता है. सो वी आर नॉट गोइंग टू मेंटेन योर लेजर अकाउंट. डाउट नंबर ऑफ डाउट्स आस्क मल्टीप्लाई बाय समथिंग. जितने डाउट पूछने पूछो, बट सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, मेरा कॉन्सेप्ट खत्म होने दो, बीच में टोको मत, नहीं तो मैं भी तुमको टोकेगा. सो मेरा कॉन्सेप्ट खत्म होने दो. आई विल नेवर गो अहेड फ्रॉम अ कॉन्सेप्ट टू अनदर कॉन्सेप्ट विदाउट आस्किंग व्हाट? Doubt. I will never ever not answer doubt. Like, you can ask on anything to anything, but that has to be related to the subject. You cannot ask, sir, what did you eat today? It has to be with reference to what we are discussing. जितने डाउट पूछने पूछो, कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद आप पूछ सकते हो. Sometimes my reply, or majority of the times I should say that, my reply may sound weird to you. आप बोलेंगे यार ये क्या है, ये क्या झाड़ रहा है हमको, गोली दे रहा है. नहीं, उसका ऑब्जेक्टिव समझ लो. मैं थोड़ा सा डाउट देते टाइम, मैं तुमको पोलाइटली भी डाउट का आंसर कर सकता हूं. तुमसे चिल्लाता नहीं हो, गुस्सा नहीं होता, कुछ नहीं, आराम से बच्चा ये ऐसा करना है, वैसे करना है. यू विल नेवर एवर इन योर लाइफ रियलाइज द काइंड ऑफ ब्लंडर दैट यू, आई विल गिव सच रिप्लाई ओनली व्हेन योर डाउट इज वेरी वेरी यूजलेस और वेरी वेरी great blunder that you have done something horrible. Then only but whenever there are good doubts, you would have observed, I have said good doubt, I answered those doubts appropriately. I said good doubt also, but हाँ मतलब you should have ability ना, जो सच है उसको सच बोलना सीखो ना. घटिया डाउट है तो घटिया बोलो, क्या फर्क पड़ता है, उसको रिप्लाई दे दो, so that the students will remember that their mistake forever. There are so many students. वो खुशी शर्मा है कि नहीं मालूम है, उधर है. कैसी तू? अच्छी है. इसको तो कितनी बार चिल्लाया होगा मैं. हाँ बहन जी, हाँ फर्स्ट लेक्चर इसके साथ गुस्सा निकाला था डेप्रिसिएशन के ऊपर. उसने कुछ तो ऐसा मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड का कुछ तो, हाँ फर्स्ट ईयर इक्वल समथिंग, आई डोंट रिमेंबर व्हाट वाज इट. जिंदगी में अभी ये डेप्रिसिएशन के ऊपर मिस्टेक नहीं करेगी. या अभी भी जितने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर अटेंड कर रहे होंगे ना, who are not learned from ecotherm, even if I ask a question about depreciation right now, even after passing foundation, you will make a blunder. You'll make a blunder. Or even if you ask a chartered accountants, I'm saying chartered accountants, who should have learned from me. Teachers तो छोड़ ही दो. The first year, college के professors especially, you can leave it. First year of purchase of asset, how do you calculate depreciation? Or you give a graph of depreciation.
डिक्लाइनिंग ग्राफ दिया, मूवमेंट आएगी वो डिक्लाइनिंग ग्राफ, पब्लिक विल कम अक्रॉस विथ व्हाट, ये डेप्रिसिएशन है। यहां पर एक्स एक्सिस पे ईयर्स है, वाई एक्सिस पे क्या है, अमाउंट है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है। एंड आई ड्रॉ अ ग्राफ लाइक दिस। इज दिस अ ग्राफ ऑफ SLM मेथड और इज इट अ ग्राफ ऑफ WDB मेथड? Is it a graph of straight line method or WDB method? Huh? None of this. सुधर गए, सुधर गए। हाँ, अब बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं समझ रहा है। गुड, कुछ लोग है WDB के आंसर देने वाले। वेरी गुड, सॉरी सर बोल रहे हैं वापस। सो कैसे? ओके, वो WDB नहीं, SLM दे दिया उसने। दिस इज नॉट अ ग्राफ ऑफ WDB मेथड, दिस इज अ ग्राफ ऑफ सम ऑफ डिजिट्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइन इक्वेशन, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द WDB। बट ये क्या है ना, उस तरीके से अगर डाउट्स को आंसर किया ना, इट इज नॉट, आई हैव नो पर्सनल ग्रज अगेंस्ट एनी स्टूडेंट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर पर्सनल लाइफ एट ऑल। सो व्हाट दैट रिप्लाई विल मेक यू रिमेंबर, ओ मैंने ऐसा माती खाया था। सो अगर मेरे आपके किसी डाउट का रिप्लाई किसी वियर्ड तरीके से दिया, डरना मत। आपका सुदर्शन गारगटे जी करके एक भाई साहब है, उनको आदर्श रखिए, बहुत अच्छा भाई। मतलब नहीं, व्हाट आई लाइक अबाउट दिस फेलो इज इन स्पाइट ऑफ दिस ही कीप्स ऑन आस्किंग, दैट इज एबिलिटी दैट यू शुड एस्पायर। टाइप ऑफ डाउट, क्वालिटी ऑफ डाउट, वो 2 मिनट के लिए बाजू रखो, बट एटलीस्ट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज बॉस ही इज ट्राइंग टू गेट द आंसर। इफ आई डोंट नो समथिंग आई विल ट्राई टू गेट द आंसर। लेट द पब्लिक लाफ एट मी, डजंट बॉदर। We all are at one big family. It doesn't matter really कि मैंने डाउट पूछा और बाकी लोग क्या सोचेंगे, बाकी लोग हंसेंगे। हंसने दो ना, हंसने दो ना। मैं पुणे में पहले पैरागॉन चप्पल पहन के आया था और बाकी लोगों के पास शूज थे, सब कुछ हो रहे शूज है इसके पास, मैं क्या करूं, पैरागॉन चप्पल अपने जो क्या को खुला पैरागॉन चप्पल क्या है मेरे पास, क्या करेंगे? It doesn't matter what others think about you, really doesn't matter in life. So doubts, please ask as many as possible, but please ask after the concept is over. Keep certain patience. If you're watching a recorded lectures and thereafter you want to ask a doubt, so वहां पर वीडियो के नीचे फंडा एकेडमी का एप्लीकेशन आएगा. Some of you could have already downloaded it. Some of you might have to download it. I will tell you the process entirely. I have learned कि आपको वीडियो बना के ही भेजना पड़ेगा बच्चों को, मतलब डेंजरस. तो मैं आपको क्या क्या एप्स मिलने वाले हैं, उस ऐप के अंदर क्या दिखेगा, वो सब के लिए मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा. 1-2 दिन रुको, आपको सबको ऐप का एक्सेस मिल जाएगा. रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी उसके अंदर रहेंगे. फॉर अ कॉस्टिंग वी डू नॉट हैव MCQs in ICI examination. We will be having MCQs after I finish up somewhat few concepts. Whenever I will have questions every day for you on the basis of what you have done for that particular day. Recorded lectures अगर आप देख रहे हो तो आपको सीक्वेंस में वहां पर वो बराबर फाइल उधर आ जाएगा ऐप के अंदर. MCQ का फाइल बीच में आ जाएगा. आप लाइव देख रहे हो तो आप ऐप के अंदर जा सकते हो, आपको नोटिफिकेशन आएगा. वो आप प्रोसेस बेसिकली फॉलो करना. एंड्रॉइड पे भी है, iOS पे भी है, लैपटॉप पे भी है, जहां पे ही चाहिए वहां पे देख सकते हो आप. सिंगल लॉग इन. सो इट्स वन सिंगल यूजर ID पासवर्ड. यू कैन लॉग इन वेर एवर यू वॉन्ट. वन लॉग इन एट अ टाइम. तीनों जगह पे लॉग इन करके I think it keeps you logged in, or it does a logout. I don't know app. Depends on the what. It does a logout from the other device. Okay. So you need to remember. You can save the password in the device, na? So whatever device is there, if it is your personal device, you can save the password. So don't have to remember, or keep a password which is something which you can remember. बहुत ऐसा dangerous password रखने की जरूरत नहीं. ये कोई तुम्हारा बैंक अकाउंट नहीं है या डीमैट अकाउंट नहीं है जिसमें तुम्हारे यस बैंक का एक शेयर होगा तुम्हारे पास. टिपिकली बच्चों का यस बैंक का एक शेयर 10 रुपए का शेयर लेके रखते हैं. सर मैंने यस बैंक खरीदा. कितने लोगों के पास यस बैंक है और आइडिया वोडाफोन है? यस बैंक, आइडिया वोडाफोन, देखो ना 10-15 रुपए का पब्लिक लेवल ही वही ना. 14 रुपए हो गया. अच्छा 4 रुपए का प्रॉफिट कमाया उसने. सर 10 रुपए का नहीं, अभी 14 रुपए का हो गया. 4 रुपया प्रॉफिट. वाह ग्रेट. तो डाउट वहां पर वीडियो के नीचे, रिस्पेक्टिव वीडियो के नीचे, कहीं पे भी जाके डाउट नहीं टाइप करने का. सो मैंने आज का लेक्चर अपलोड किया. आपको डाउट पूछना है, लेक्चर के अंदर भी पूछ सकते हो आप, लेकिन आपके लोग होते हैं ना बाद में याद आ जाता है, उधर भी पूछ सकते हो. बट पहले लेक्चर पूरा देख लेना उधर. मे बी आफ्टर द कॉन्सेप्ट इज ओवर दैट डाउट कुड हैव बीन आंसर्ड इन द लेक्चर इटसेल्फ. यू कैन आस्क दैट डाउट लेटर.
सो डाउट हो गया, ये हो गया। बुक्स नोट्स आपको आज मिलेंगे शाम को या मे बी टुमारो। सो यू विल गेट अ नोट्स, दोज हु आर फेस टू फेस यू विल गेट इट हियर। घर वालों के लिए मुझे वापस एड्रेस लेना पड़ेगा। एडमिशन फॉर्म में कितनी बार बोला था एड्रेस, डिटेल्ड एड्रेस विथ पिन कोड। सिर्फ पिन कोड टाइप करते हैं, विथ पिन कोड, सिर्फ पिन कोड पढ़ते। अरे पिन कोड डालने से बुक्स नहीं जा सकते हैं यार। सो आई विल गिव यू द गूगल फॉर्म, जो उनको यहां पर कलेक्ट करना है नोट्स, आप यहां पर कलेक्ट करना है। जिनको कुरियर चाहिए, कुरियर आएगा, 1 हफ्ता लगेगा कुरियर को, मतलब हम भेजेंगे, आपको आने के लिए 1 हफ्ता लगेगा, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस। सो यू विल हैव 2 बुक्स, concept book and what, class book. For every subject you'll have these kind of 2 books, except for law where you'll have multiple books because you require length is bigger. So there are concept book is separate for your business law, separate for company law. There is a mind map, there is a ready reckoner, there is question bank, the multiple things for this thing. Sir, open one branch in Gujarat. नहीं रहे। I'll see. We are in Pune only. We are not trying to do anything crazy. Still, we have got about 750 students right now. There are in your batch. There are some watching recorded lectures. This is in one city. In one city, people claim all over India they got about, let's say, 40-45 students above 300. In one city, we have got 38 students above 300. We have got 55% पासिंग परसेंटेज। योर रिजल्ट आपने गूगल फॉर्म दिया, आपका मैंने आपके पूरे बच्चों का, हर एक बच्चे का ईमेल आईडी, रोल नंबर, हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स, उसके साथ डेटा है। तुमने ही मुझे दिया डेटा, तो उसके बेसिस पे मैं बात कर रहा हूं। और मैं तुमको इंटरमीडिएट में भी प्रूव करके दिखा सकता हूं। अगर तुम लोग सिर्फ मुझे डे 1 से लास्ट डे तक बिना पूछे, तुमको मेरे को गाली देना है, गाली दे दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आउटकम क्या रिलेवेंट है? Passing. 70% I can ensure passing in a much easier way. It is cakewalk. 70 is a cakewalk. Provide you follow, and you very importantly, you come up under stress at any point of time. It could be stress due to family matters. It could be financial stress. It could be study related stress, relationship related stress, maybe. Kind of Zoom ने आपको मौका नहीं दिया होगा, बट किसी ने मौका ढूंढने की कोशिश की होगी, तो वो टाइप का स्ट्रेस होगा। वॉट एवर काइंड ऑफ स्ट्रेस यू हैव, प्लीज रीच आउट टू एनी वन ऑफ अस, मे बी मी, मनीष सर और सुचरित सर और ऋषभ सर, एनीवन, सुबोध सर, किसी को भी आप मैसेज ड्रॉप करना। समवन विल बी देयर टू हेल्प यू आउट, बट डू नॉट कीप दैट स्ट्रेस देयर इन योर हेड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इफ यू आर नॉट गोइंग टू स्पीक, nothing will happen. I saved about 4-5 students from committing suicide so far. I saved homes of about 4-5 students. About 8 students who are chartered accountants who are orphan. Who I don't know whether I spoke to you at all on this or not. I have some students who are completely blind and become a chartered accountant. I had I don't know whether I had students who don't have hands and fighting for the chartered accountants because we fought for them. I have chartered accountants whose leg height is not same. He cannot walk properly. I don't know whether तुम लोगों को मैंने मैराथन लेक्चर्स दिए थे, उसमें मैंने शायद बुलाया होगा विशाल को। वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स से सीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हर एक चीज का सोल्यूशन है अपने पास। मतलब इट मे बी विद इन द रीच, इट मे बी समटाइम्स आउट ऑफ द रीच। वी आर डन क्रेजिएस्ट ऑफ द क्रेजिएस्ट थिंग्स। एनीथिंग इज पॉसिबल। यू कैन फाइंड आउट अ सोल्यूशन। जो आपके रीच में नहीं हो, मेरे दिमाग में कुछ अलग आ सकता है, थोड़े अतरंगी है हम, तो कुछ भी आ सकता है। बट यू हैव अ स्ट्रेस, यू आर नॉट गोइंग टू स्पीक आउट। ऑब्वियसली मेरे को कोई ऐसा सपना नहीं पड़ेगा, चलो इसको स्कैनिंग करता हूँ, इसके अंदर कितना स्ट्रेस भरा है, इसके अंदर कितना स्ट्रेस भरा है। नहीं, आई कैन नॉट डू दैट, दैट इज नॉट पॉसिबल। अभी तक वो हिमालयन योगी नहीं है हम। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमारे कंट्री में है, सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है दुनिया का इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ डेरिवेटिव्स, was run by some yogi in Himalaya whose name is not known to anyone in the entire country right now. I don't know whether you read the news 2 weeks ago. That was a shock to everyone. A national stock exchange was being run not by the actual CEO. The CEO was acting under the instructions of an Himalayan yogi. और उसके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है इन इंडिया विद द सेबी, हिमालयन योगी के अगेंस्ट। अभी उसको सर्च कर रहे हैं कौन है ये हिमालयन योगी, who used to give instructions to the chief executive officer of NSE. तो छोड़ दो। पॉइंट ये है कि आप, हमारे पास वो कैपेबिलिटीज नहीं है।
योगी बनने की और ढूंढने की आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है। यू आस्क डाउट्स, यू एंजॉय, जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछने पूछ सकते हैं। यहाँ पे फेस टू फेस हो तो आप लेक्चर के बाद भी पूछ सकते हैं, पहले 2-3 दिन मत पूछो। आई एम स्टिल, माई फैमिली मेंबर्स वेर पॉजिटिव, सब लोग रिकवर हो चुके हैं, बट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर व्हाट 3-4 more days. My both the daughters were positive for 1 day. Next day they became all right. So I'm just, the reason why I ask some of you to sit there 2-3 days, maintain the proper precaution. I done my test and everything, but still I don't believe in the Indian testing mechanism, because तीनों थे तभी भी मैं नेगेटिव आ गया, तीनों पॉजिटिव थे तभी भी नेगेटिव आ गया, वापस किया, वापस उसका वैल्यू बोल रहा है, वापस टेस्ट करके नेगेटिव है, छोड़ दो। बट टेक अ प्रिकॉशन, देयर इज नो प्रॉब्लम। मैं कोविड को 2 बार झेल चुका हूं। पहली बार मनीष सर ने गिफ्ट किया था, इस बार मेरे डॉटर ने गिफ्ट किया मेरे को। सो इट्स ओके। हाउ मेनी हैड कोविड बाय द वे? यहां से कितने लोग कोविड होके आ चुके? ओके, कोविड हो भी गया तो भी डरना मत, मतलब तुम लोगों को तो कुछ नहीं होने वाला है फॉर श्योर। घर पे सिर्फ जाने के बाद, इन केस यू आर लोकलाइट, आफ्टर गोइंग होम प्लीज टेक अ थरो बाथ, even if you are taken in the morning. Morning is mandatory. खाकू जी नहा के आने का, अगर नहा के बिना आज तो नहा के आया ऐसा लग रहा है, तो रोज ही नहा के नहीं आते हो तुम। सो नहा के आने का, और घर वाला पब्लिक भी 7 बजे लेक्चर है तो थोड़ा जल्दी उठ के नहा के आ जाओ, मतलब नहा के बैठते जाओ। सो दैट इज मैंडेटरी यार, मतलब नहीं यार, इरिटेटिंग एब्सोल्युटली। तो नहा के बैठो, घर पे जाके प्रॉपर नहाओ, बेसिक हेल्थ का प्रिकॉशन कैसे लेना क्या लेना, दैट इज ऑल अप टू यू। चलो बहुत टाइम पास हो गया, लेट्स कम डाउन टू द सब्जेक्ट। वी आर स्टार्टिंग विद द कॉस्ट अकाउंटिंग। My friend, you have learned something called as accounting in 11th standard, 12th standard, your foundation also you have learned this accounting thing. What is accounting? The whole accounting thing, it basically deals with what? Collecting the data, collecting some data. About what? Are we going to collect the data about the population, or are we going to collect the data about what is your liking towards a political party or towards a particular celebrity or a particular leader? No, we are not talking about that kind of data. What are we talking about? We are talking about the data about the financial transactions that take in a business entity. So accounting basically involves 3 broad elements. Any accounting, broad elements of accounting. I'm not telling you branches of accounting. कोई भी अकाउंटिंग आप लर्न करो, यू आर गोइंग टू लर्न डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. इट बेसिकली स्टार्ट्स विथ व्हाट? collecting data. You have to gather the data about the transactions. So you learned something called the vouchers in your 11th 12th standard, a purchase voucher, sales voucher, or you could have learned debit note, credit note for sales return, purchase returns, right? You could have learned bills receivables, bills payable. प्रैक्टिकली होते नहीं हो बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल. अगर आपने फाउंडेशन का लेक्चर ठीक से सुना होगा तो प्रैक्टिकलिटी थोड़ा रिलेवेंस उनका कम हो चुका है इन टुडेज टाइम्स. सो you have vouchers. What is the objective of those vouchers? Objective of those vouchers is basically capture the data about a transaction. मैंने परचेस किया है गुड्स, कैश बेसिस पे मैंने परचेस किया होगा, क्रेडिट बेसिस पे परचेस किया होगा. वो ट्रांजैक्शन को मैं कहीं ना कहीं तो कैप्चर करूं, कहीं ना कहीं तो उसको रिकॉर्ड करूं. आपने उसको फैंसी लैंग्वेज बोला बुक कीपिंग. योर सब्जेक्ट वाज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. सो कलेक्टिंग डेटा. व्हाट डू यू डू विद द डेटा? मेरे पास डेटा है, तुम्हारे पास क्या है? हाँ नहीं ना, डेटा का करोगे क्या? एनालिसिस करोगे, समराइजेशन करोगे. सो यू कलेक्ट द डेटा which you obviously record, and then you do a summarization of the data. So in the financial statements which you prepared, it was basically summary of a data. So you prepared a profit and loss account or trading profit and loss account. You prepared a balance sheet. Some of you could have prepared some notes to accounts, especially CBSE or ICSE students. So notes to accounts तुमने कुछ बनाया होगा. ठीक है, वो क्या था? वो summary था. During the particular year, what happened in terms of profitability, in terms of improvement in assets? What happened? I just want to know. That was called as what? Summarization of the data. But उसके बाद करोगे क्या? Analysis, or basically
डिसीजन मेकिंग। अगर उस डेटा के साथ कुछ गलत हो रहा है, मतलब इफ देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग इन द ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स से आई एम स्पेंडिंग टू मच ऑफ मनी ऑन वन पर्टिकुलर एक्टिविटी without getting a benefit, I need to take some corrective action. So you need to take certain actions or decisions. Decision could be, should we produce this raw material in house or should we purchase it from some vendor? For example, Tata Motors tire, should you make a tire or should you buy the tire from Dunlop or MRF or Continental or Bridgestone for that matter, कंपनीज के नाम थे। तो टायर हम खुद बनाए या कहीं से परचेस करें, डिसीजन है। अब ये डिसीजन लेने के लिए आपको कुछ डेटा चाहिए और कुछ सेट ऑफ टेक्निक्स भी चाहिए, सिर्फ डेटा लेके फायदा नहीं है। इफ यू हैव डेटा विदाउट एनी काइंड ऑफ अ टेक्निक टू यूज दैट पर्टिकुलर डेटा, इट इज ऑफ नो यूज, इट इज ऑफ एब्सोल्युटली नो यूज। So we are going to learn some techniques out there in the syllabus. In addition to that, there are a lot of new age techniques. In case you people are willing to concentrate, maybe on some Sundays I could take a sessions, not during the weekdays. So today, your traditional techniques of analysis will help you to achieve a particular level. But problem real life में क्या होता है ना, data is in tons and tons. It's a huge. So to analyze a large sets of data, you cannot do it with the typical calculator and the pen and the paper. It is not possible. You have to go with the computers. So you have to learn something called as a Power BI, business intelligence, Power Business Intelligence. You have to learn something called a Python, or you have to learn something called a Tableau. I did Power BI and Python for one batch. Tableau I not tried so far in any batch. Maybe your batch could be the experiment. I'll take you to the basics of all, because जो चीज आप यहां पे सीखोगे ना, आपको अगर रियल लाइफ में उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करना है, बस you need a tools which are completely different from what you learned here, because here you are going to learn on the very small set of data and do what? Some calculations. Like I want to give you bifurcation of semi-variable cost. I'll give you 4 or 5 data points in the classroom. I cannot give more than 4 or 5. It will take a hell lot of time. But real life में you could have the multiple data points spanning over last, let's say 5 years. Cost structure of last 5 years you have, and I say 5 years का cost का data है तुम्हारे पास। अलग अलग headings के अंदर data group हो चुका है। Electricity cost है, telephone expenses है, rent है, मेरा insurance cost है, अलग अलग elements of cost है। ऐसे मैं आपको एक 2000 ledger accounts देता हूँ। ये 2000 ledger accounts है पिछले 5 साल में expenses के। मेरे को बोलो इसमें से वेरिएबल कितना है और फिक्स कितना है। टाइम है तुम्हारे पास 15 मिनट। Even if you are a chartered accountant, even if you have got a first rank all over India, you will not be able to do it on the basis of what? The knowledge that you get during the books. Technique, processes you know, but how do I do it in reality, boss? If you do not gather those skills, it is of no use. तो वो आपको गैदर करना पड़ेगा, वो स्किल्स भी हम करेंगे, और उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। सो ब्रांचेस और द ब्रॉड बेसिस पे अकाउंटिंग विल इन्वॉल्व दीज 3 phases. Gather the data from somewhere, you have to develop the appropriate system to capture the data, record those transactions, get the summary of those transactions, and then finally on the basis of that summary you want to take certain decisions. ठीक है, तो ये अकाउंटिंग का ब्रॉड बेसिस पे आपने सीखा। अभी अकाउंटिंग के अगर मैं ब्रांचेस करूं ना, तो आई गेट समथिंग लाइक दिस ऑन अ वेरी ब्रॉड बेसिस, डिपेंडिंग ऑन हु इज द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन आप यहां पे जनरेट करने वाले हो समरी बना के और डिसीजन लेने के लिए, वो इंफॉर्मेशन किसके लिए है, उस बेसिस पे अकाउंटिंग के कितने ब्रांचेस है बच्चों। ये तुम्हारे फाउंडेशन में भी था बाय द वे। फर्स्ट चैप्टर अगर आपने खोल के देखा होगा ना फाउंडेशन का, तो फाउंडेशन में था ये। इसके 2 ब्रांचेस है। क्या 2 ब्रांचेस है बच्चों? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड व्हाट? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। These are the 2 broad branches, very broad level. Financial accounting focuses on whom? External users. Users of account are internal or external. Users of accounting could be internal users or external users. What do I mean by external? आपको रिप्लाई देना होता है,
मतलब बेसिकली यहां पर आए तो आप शायद भूल गए होंगे क्लासरूम में कैसे बैठा जाता है, कैसे बात किया जाता है. हाँ, तो यू कैन गिव रिप्लाई. एक्सटर्नल मीन्स व्हाट? स्टेक होल्डर्स? नो. External means other than the management. Management is internal. So all those persons who are not part of what? Management. So in case of a company, you own the shares of a company. Are you a part of management? Does a company ask you before taking any decision? You own shares of Yes Bank, you said. So does a Yes Bank management ask you while sanctioning a loan, do they come to you, Mr. Jale, shall we give the loan to this particular person or shall we not give? You are a shareholder worth rupees 14, 40% appreciation you got. Do they ask you? You are a shareholder, na? You are a shareholder of the company, but you are not a part of management. So financial accounting entire focus is on whom? अरे बोलो. इनका फोकस है एक्सटर्नल यूजर्स के ऊपर. Who are the external users? Your shareholders of a company. In case of company, shareholders are not part of internal group. Some of the shareholders can become part of management also, like you own a large number of shares, so you are a shareholder also, but you are elected to be a executive director of a company also, and you are in the position of what? A director. Or you are a shareholder but you are an employee also of the company. How is it possible? मैं shareholder हूं और मैं employee हूं. Stock options, ESOP, employee stock option plans. So lot of companies give option to their employees to buy what? Shares. ये ESOP आपके सिलेबस में है, CA इंटरमीडिएट में, ग्रुप 2 अकाउंट्स, लॉ में भी है, ग्रुप 1 लॉ, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान. अब यही ESOP पढ़ने के लिए तुमको जो तुमने प्रोबेबिलिटी सीखा था ना, याद है? प्रोबेबिलिटी चैप्टर याद है? एक डिस्ट्रीब्यूशंस करके चैप्टर सीखा होगा तुमने, याद है? तुमने वो डोंगर किया होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. वही सब कॉन्सेप्ट्स यूज करके मैं तुमको एक खतरनाक नोबेल प्राइज विनिंग मॉडल सिखाऊंगा. दैट मॉडल required 6 years for the Nobel Committee also to understand what is it. Black, Fisher Black and Myron Scholes करके दो बंदे हैं. Black and Scholes मॉडल. स्टॉक ऑप्शंस का वैल्यू कैसे ढूंढना है? How do I find a value of a stock option? For example, you take up a job in something like Ola Electric, let's say for example, or let's say you go to SpaceX. SpaceX क्या है? एलन मस्क का कंपनी है. गुड. सो यू गेट टू इनटू सम न्यू एज कंपनी और इवन अ ट्रेडिशनल कंपनी लाइक HDFC और Reliance for that matter, or Wipro or Infosys for that matter. Many companies, to retain the talent of a company, they give an option to the employee to buy shares of the company at a rate lower than market price. Obviously, if you give an option equal to market price, they'll say हम stock exchange पे आके खरीदेंगे ना यार. HDFC बैंक का शेयर चल रहा है अभी लेट्स से 1500 रुपीस पे, एंड आई गिव यू ऑप्शन टू बाय HDFC बैंक एट 1700. व्हाई विल यू बाय? I could buy if I say you will have a right to buy shares of HDFC bank at 1700 after 5 years from today, provided you work with the company for the next 5 years. तो अगर कंपनी में तुम 5 साल तक काम करोगे, 5 साल के बाद even though share price is above 1700, you will have right, you will have option to buy the shares at what? 1700. If you buy at 1700, you become shareholder. If you buy, you are an employee also. So are you a part of internal user or are you a part of external user? You are part of both. But I'm talking about a role. When you are as a shareholder as a role is a external user. The information that he needs for his decision making is provided by फाइनेंशियल अकाउंटिंग. तुमने कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, तुम्हारा डिसीजन क्या हो सकता है? शुड आई रिमेन इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी और नॉट? शुड आई मेक अ फर्दर इन्वेस्टमेंट और नॉट? दैट इज ओनली डिसीजन दैट यू आर सपोज्ड टू टेक. अब वो डिसीजन लेने के लिए जो भी डेटा तुमको चाहिए, वो डेटा कौन देगा तुमको? फाइनेंशियल अकाउंटिंग. मैं टाटा मोटर का शेयर होल्डर हूं. डू आई हैव टू टेक अ डिसीजन? शुड वी बाय द टायर और शुड वी प्रोड्यूस अ टायर?
ये डिसीजन मुझे लेना है या टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट को लेना है? मैनेजमेंट को लेना है। तो मुझे क्या डिसीजन लेना है? Should I remain invested in what? Tata Motors or not? For that, what I need a profitability of Tata Motors. I need assets of Tata Motors. I need to know which segments of Tata Motors are doing good, which segments are not doing good. So I know, okay, चलो उनका Jaguar and Land Rover बहुत अच्छा कर रहा है, but वो कौन से टेरिटरी में अच्छा कर रहा है? I want to know whether it is doing good in Europe or not, whether it is doing good in China or not, because China is the largest car market or automobile market. Whether it is getting a good traction in India or not. If it is getting good traction in India, what kind of volume growth do I have in the Indian operations? ये information मुझे चाहिए. I don't have to take a decision. Should the new model of Jaguar be launched or not with the facelift or not? Or should Range Rover come up with the EV option or not? Or how to should we set up our own in-house chargers for charging the EV cars, or should we outsource it to the Tata Power or Adani Greens or any other company for that matter? I don't have to take that decision as a shareholder of Tata Motor. That decision is to be taken by मैनेजमेंट. तो मेरा जो इंफॉर्मेशन नीड है वो बहुत लिमिटेड है. वो इंफॉर्मेशन नीड कौन देता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ये फोकस आप क्लियर रखो, बिकॉज इन योर सिलेबस यू हैव टू लर्न बोथ. यू हैव टू लर्न फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज वेल एज. सो आपका जो थिंकिंग स्टाइल है ना वो चेंज होना चाहिए. सुबह अलग होना चाहिए, दोपहर में अलग होना चाहिए. अब बोलेंगे क्यों? दोपहर में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करेंगे, सुबह मैनेजमेंट अकाउंटिंग करेंगे. सो आपका फोकस आपको चेंज करना पड़ेगा. तो एक्सेल यूजर में कौन कौन आ गया बच्चों? शेयर होल्डर्स आ गए, और बस शेयर होल्डर्स आ गए. गवर्नमेंट आता है. गवर्नमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरनल यूजर. Even if the government owns the shares, government does not get involved into management. Management is run by a separate persons. It could be government babus also there to do the management, which are extremely good in some cases and extremely pathetic in some cases. There are so many government companies which are extremely good, like you find out ONGC, the management of the ONGC is great. चलो उसको market में valuation बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है. That is basically because of government ownership. But the way the company is run, and the profitability and the other metrics you see, it's one of the nice companies that is government is running. But just because government is there are a lot of investors don't want to invest. Reason? Government public का सोचता है, government votes का सोचता है. Government will not think of shareholders first. Government will always think of public first. That is why you should always do affairs with public sector banks or public sector company. Do not marry them. I will never marry SBI. I will marry HDFC Bank 1000 times in my life. क्यों? मुझे मालूम है HDFC का मैनेजमेंट केके मिस्त्री और दीपक पारेख, they will focus on whose wealth? Shareholders wealth. I am not sure about government. Government को वोट चाहिए, कभी भी वो क्या करेगा? एग्रीकल्चर लोन्स waived off. Waived off. भाई और बहनों, आपको आज से जो भी आपने कृषि लोन लिया होगा वो आज रात 8 बजे से देने की जरूरत नहीं है. एनी टाइम सच अनाउंसमेंट कैन कम. ऑब्वियसली इट विल नॉट कम इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, पब्लिक सेक्टर बैंक का जो मैनेजमेंट है, दैट मैनेजमेंट विल नॉट टेक अ डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? द शेयर होल्डर्स विल, लाइक LIC. LIC invested in IDBI Bank, a bank which was not getting bought by anyone, a bank which was on the verge of bankruptcy. IDBI Bank किसका था? गवर्नमेंट के पास ओनरशिप था उसका. गवर्नमेंट ने क्या किया? LIC को बोला चल तू अभी इन्वेस्ट कर, हमारा पैसा हमको वापस दो और पैसा उस पर इन्वेस्ट कर. अगर यही चीज LIC अगर प्राइवेट सेक्टर होता ना, HDFC लाइफ होता है इंश्योरेंस कंपनी, एंड गवर्नमेंट कॉल से HDFC लाइफ, IDBI उठा ले, तो कान के नीचे मिलेंगे. क्यों? प्राइवेट सेक्टर विल नेवर इन्वेस्ट, बिकॉज IDBI बैंक, द वे दैट बैंक इज मैनेज्ड, द वे द NPAs आर देयर, और द वे द मैनेजमेंट वर्क्स, इट इज, देयर आर सम क्लासिक लेसन्स you should learn how not to do a business. Learn government sector companies to a large extent. How not to do a business. You have to learn that. In addition to what? How to do business. तो वहां पर गवर्नमेंट कंपनीज में गवर्नमेंट इज इवन द ओनर, गवर्नमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ
Management is run separately, but that management is always under the control of government due to the political factors, which is extremely unfortunate. Mr. Modi, when he became a prime minister, or when he was on the verge of becoming a prime minister, when I attended one of the meeting at the Ferguson College in Pune, Mr. Modi had very proudly said, due to which I voted for Mr. Modi at that time, government has no business to be in business. खत्म. कितने लोगों को समझा मालूम नहीं. Do you elect the members of parliament to run a bank in our country? To run an airline? To make the bread? Government used to make a bread, for your information. अभी नहीं, हिंदुस्तान बेकरी नहीं, हिंदुस्तान एक ब्रेड आता था, मॉडर्न ब्रेड, मॉडर्न फूड्स. Do you know company called Modern Foods? Government used to make a bread. तुम्हारे घर में जो ब्रेड आता था ना, almost 50% of bread sold in India were made by government of India. Bread? Boss, our private sector is not capable of making bread. Watches government of India used to make. HMT. इंडिया के सबसे ज्यादा वॉचेज होते हैं वो गवर्नमेंट ने बनाए. आई अंडरस्टैंड कि बॉस, बट हर चीज गवर्नमेंट क्यों करना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना क्या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी? गवर्नमेंट इज फॉर व्हाट पर्पस? Government is to protect ourselves from those bloody Pakistanis and Chinese also now. You are supposed to protect the borders. You are supposed to maintain law and order. You are supposed to allow the freedom. Animal spirit of Indians should be allowed. But in India, गाड़ी बनाना है government. Government used to produce the vehicle, or earlier they not producing. They are deciding how many vehicles you could put. License Raj was there in our country at one point of time. चलो अभी वो तो चला गया, but even today a lot of businesses where government is involved where it should not be. So government is an external user because government is not involved into management on paper. In reality, finance ministry can always control anything in the government company. Like LIC, when they invested in the IDBI bank, obviously there would have been phone call from a finance minister or somebody of the level of the secretary. He would have given a phone call to the LIC chairman, बेटा तेरे पास इतना टाइम है, इतने टाइम में इतना इन्वेस्ट इधर करना है, ये अनाउंसमेंट मेरे को न्यूज में आना चाहिए. बस आना चाहिए मतलब चाहिए. There are so many cases where you will observe, आप गूगल सर्च करके देखना, where there are so many IPOs or so many issue of shares by the government companies which are not getting subscribed. A phone call goes from finance ministry, LIC enters, job done. Probably इंडिया के अपने LIC के फैंसी इतने अपने कंट्री में, huge number of and falling that we have in our country for LIC. पैसा ही उतना है, 40 लाख करोड़ है लगभग LIC के पास. तो LIC कहीं पे जाके इन्वेस्ट करते हैं. अब ये क्या है? ये सिर्फ इंडिया में मिलेगा आपका कॉन्सेप्ट, काइंड ऑफ थिंग, वेयर गवर्नमेंट, इवन दो इट इज अ एक्सटर्नल यूजर, गवर्नमेंट बिहेव्स लाइक व्हाट? इंटरनल यूजर. दिस इज अ यूनिक थिंग. सो शेयर होल्डर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए, और कौन है बच्चों? Your creditors. Creditors are external. They are not involved into day-to-day management. Your debtors also are interested in your financial settlement. Why are creditors interested? उनका पैसा वापस मिलेगा कि नहीं भाई? मैंने अगर तेरे को गुड्स बेचे है या सर्विसेज रेंडर की है, will I get my money back or not? That depends on your financial position. है ना? So creditors are interested, debtors are interested, then lenders are interested. Lenders are kind of creditors only. बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया. और होते क्या कोई? मीडिया. वाह, उसको बोलते हम, अच्छे बात है, मीडिया नहीं बोलते हम, थोड़ा फैंसी लैंग्वेज यूज करेंगे, एनालिस्ट्स. मीडिया बोले तो क्या लेवल अपना थोड़ा डाउन होता है. ये चीज एक आपको कोर्स में सीखनी पड़ेगी. सिंपल चीजों को ना ऐसे थोड़े फैंसी वर्ड्स या कुछ क्रिएटिव वर्ड्स क्रिएट करो और बोलो. इट इज अल्टीमेटली व्हाट? मीडिया नहीं बोलने का, एनालिस्ट बोलने का. बट आई एम before analysts, I am telling you, credit rating agencies. Sir, potential investors, that is public at large, you can say, na? That is why you are saying potential investor. Anybody could be interested. Analysts, मीडिया में बहुत सारे कंपनीज होते हैं, वो एनालिसिस करते हैं कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का. एंड पब्लिक एट लार्ज इज बेसिकली योर एक्सटर्नल यूजर्स. अब ये जो यूजर्स है ना बच्चों, इनको इंफॉर्मेशन जो मिलता है, दैट हैज टू बी रेगुलेटेड बाय लॉ.
this information which you provide to them is not driven by what management feels. The information provided is info provided is regulated by law. अब बोलेंगे सर regulated by law मतलब बोलता हूं तुमको 2 मिनट रुको. Provided by what? Info provided is regulated. Company law मालूम है तुमको? अरे do you know company law? So financial statements of the company and what information company should give in the financial statement is to a large extent regulated by what? Company law. When you start learning company law section 128 onwards, it's a financial statements plus accounting standards. 128 will take you to the schedule number 3 to the Financial Companies Act. Schedule 3 of the Companies Act नाम तो सुना होगा गलती से, फॉर्मेट थोड़ा फाउंडेशन में रट लिया होगा, P&L बैलेंस शीट का फॉर्मेट अभी बना नहीं क्या तुमको इंटरमीडिएट में. So there is a P&L, there is a balance sheet, there is lots and lots of information that you are supposed to provide. याद those who are in the group 2 याद होगा तो निर्मला मैडम ने अभी कुछ बहुत खतरनाक अमेंडमेंट किए शेड्यूल 3 के अंदर, बहुत खतरनाक है. रेशो एनालिसिस सिलेबस में आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो, आपने आईसीए को मालूम पड़ा है कि नहीं अभी तक, बट निर्मला मैडम हैज अमेंडेड इट 31st March 2022 onwards when the financial results start coming in India. In the schedule 3 अब तक P&L बैलेंस शीट नोट्स टू अकाउंट्स था, और एक चीज निर्मला मैडम ने ऐड कर दिया है. There are certain ratios which you have to calculate. You have to also explain how did you calculate. You are not just supposed to write a number. You have to also explain why did a ratio deviate from the last year if the deviation is material. Difference अगर material है 2 साल के बीच में, तुम्हारा रेशियो का डिफरेंस क्यों आया. तो ये इंफॉर्मेशन किसके लिए है? वो जो रेशियोज है वो सब रेशियोज एक्सटर्नल यूजर्स के लिए. इन केस दोज हु डिड द ब्रह्मास्त्र बैच, रिमेंबर मैंने आपको शायद दिखाया भी था मेरे हिसाब से रेशियोज, कुछ रेशियोज. हाँ, निर्मला मैडम ने कुछ रेशियोज ऐसे लिखे. निर्मला मैडम मतलब ये फाइनेंस मिनिस्टर अपने कंट्री की. अभी ये थोड़ा मेरे को पैंडेमिक में थोड़ा इरिटेटिंग किया था, बट दिस 2022 बजट आई रियली लाइक्ड इट. आई डोंट नो वेदर शी ओनली रोट इट और नॉट, बट whatever, due credit must be given whenever it is due. This budget was good one. So government of India during pandemic, Nirmala madam is a finance minister plus minister of corporate affairs, so she regulates that entire company. She's a head right now. So she matlab government has introduced one new amendment from 1st of April 2021 onwards. Whatever financial statements get prepared in our country, you have to provide lot of more information to the external users. अब तक क्या था, P&L बैलेंस शीट नोट्स टू अकाउंट्स, बट बहुत सारे लोगों के पास रेशियो कैलकुलेट करने का तरीका नहीं था. या मैंने आपको ग्रुप 2 में अगर जो लोग थे याद होता तो मैंने आपको स्क्रीनर तिजोरी दिखाया था, और उन लोगों ने क्या क्या माती खाया था तुमको भी दिखाया था मैंने. मतलब इन इंडिया द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम. टोटल मैच नहीं होता यार बैलेंस शीट के. कैन यू सी दैट? मतलब we saw it for some companies, total of the balance sheet was not matching here. तुम कैलकुलेटर पे भी टोटल मैच नहीं होता, रेशियोज हर जगह पे अलग अलग आते हैं. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नाउ ट्राइड टू डू स्टैंडर्डाइजेशन, बट इट इज फॉर whom? एक्सटर्नल यूजर्स. तो एंटायर फोकस आउट देयर इज एक्सटर्नल यूजर्स. बट इंटरनल यूजर्स की आप सोचो जरा, एक्सटर्नल यूजर को क्या चाहिए? प्रॉफिट कितना हुआ, इन्वेस्टमेंट क्या है, कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है. वो इंफॉर्मेशन उसको चाहिए बस. उसको ये नहीं चाहिए हाउ शुड आई डिसाइड द सेलिंग प्राइस ऑफ माय प्रोडक्ट. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो आपने किया ना 11th-12th में, अरे रिक्स सेलिंग प्राइस डिसाइड किया गया. You pass a journal entry for what? Goods sold, sales, customer account debit to sales account. उसमें भी थोड़ा सा जीएसटी दिया था मैंने तुमको, तो बजाया होगा, याद होगा तुमको. तो अगर एक तो में थे और तुमने अगर सच में वो लेक्चर अटेंड किया था, मैंने तुमको जीएसटी के साथ सेल्स का एंट्री पास करने का बोला था. 85% ऑलमोस्ट शुड हैव गॉन रॉन्ग. इवन टुडे आई गिव अ क्वेश्चन, 50% विल गो रॉन्ग. सेल्स का एंट्री भी नहीं आएगा तुमको, फाउंडेशन पास हो गए तो भी 50% बेरे मिनिमम करना है ट्राई. हाँ चलो देखते हैं अभी कितने लोगों को वो लेक्चर तुमने अगर देखा होगा तो ही समझेगा. सेल्स का एंट्री देखते हैं अभी. मैंने सेल
फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंने सेल का एंट्री पास किया, लेकिन सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड किया? कैसे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट आंसर हाउ टू डिसाइड अ selling price. It simply says if you know selling price, you know quantity sold, you can pass an entry of sales. Let's see. Take on. लिखो, देखते हैं. बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं. ABC Limited sold goods worth rupees 10 lakhs, including 18% GST, including what? 18% GST. This 10 lakh includes refundable deposit of rupees 50,000. Journalize. Pass entry of sales. एक ही एंट्री चाहिए मुझे, मल्टीपल एंट्री, कंबाइन एंट्री कर सकते तुम. मुझे सिर्फ सेल्स की एंट्री चाहिए. आई जस्ट वांट टू टेस्ट व्हाट काइंड ऑफ क्राउड वी हैव. तुम लोगों ने अब तक टिपिकली क्या किया? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. वही मैं थोड़ा सा रियल, आप बोलेंगे सर ये ऐसा रिफंडेबल डिपॉजिट क्या होता है? आपको एग्जांपल चाहिए? पहले सुनो, एग्जांपल देता हूं. फिनोलेक्स केबल्स कंपनी है. इट सेल्स अ केबल्स टू ऑटोमोबाइल कंपनीज, समथिंग लाइक टाटा मोटर्स. और टाटा मोटर डजंट परचेस अ केबल डायरेक्टली. हर एक कार के अंदर या हर एक गाड़ी के अंदर बहुत सारा केबल रहता है, उसको बोलते हैं वायरिंग हार्नेस. क्या बोला मैंने? वायरिंग हार्नेस. सो विच इज प्रोड्यूस्ड बाय याजाकी कॉर्पोरेशन फ्रॉम जापान और मदरसन सुमी फ्रॉम इंडिया. सो दीज आर द टू टॉप नॉच प्लेयर्स इन मैन्युफैक्चरिंग वायरिंग हार्नेस. अब गाड़ी का जो मदरसन सुमी ऐसा नहीं बोलता मार्केट में, चल रहे 100 मीटर केबल दे, ऐसे केबल का बंडल, ऐसा छोटा सा बंडल लेके आता है क्या? नहीं. वो कहां से केबल लेके आते हैं? बॉबिन के अंदर. केबल बॉबिन. बॉबिन समझता तुमको? नहीं? कभी रोड पे देखा होगा बीएसएल के अंदर ये ऐसे बहुत बड़े बड़े साइज के बॉबिन्स रहते हैं. सो ये तो वुड का बना हुआ है. हाँ, ये देखो, दीज आर द ह्यूज बॉबिन्स ऑफ व्हाट? मेड फ्रॉम मेटल. तो उसके अंदर केबल ऐसा लगा के रखता है. और ये बॉबिन पूरा का पूरा किसको दिया जाता है? याजाकी कॉर्पोरेशन को. फिनोलेक्स इसके ऊपर केबल टाई करके उसको याजाकी को देता है. नॉट दिस मे नॉट बी द लिटरल बॉबिन. एडवांटेज क्या है? याजाकी उसको उनके मशीन के अंदर लगाता है, एंड दैट बॉबिन कीप्स ऑन मूविंग. ऑटोमेटिकली केबल कम्स आउट. दे कट द केबल एज पर द रिस्पेक्टिव रिक्वायरमेंट. मशीन कट करता है ये सब कुछ. So it becomes easier. So instead of giving a cable of let's say 100 meters, 200 meters, they sell the cables in lakhs of meters. ये बड़े बड़े बॉबिन्स रहते हैं. BSNL when it buys the cable, optic fiber cable, BSNL और Reliance जो आप रोड पे देखते हो कभी, तो बहुत बड़े बड़े ऐसे कंटेनर्स रहते हैं. So वो कंटेनर जो रहता है, that is not bought by Yazaki. Yazaki is a buyer from Finolex cable. Finolex को बोलता है देखो ये केबल का प्राइस इतना है, प्लस ये बॉबिन का प्राइस इतना हम लगा रहे हैं, लेकिन तुम ये बॉबिन का हमें क्या कर सकते हो? रिटर्न कर सकते हो. रिटर्न करने के लिए हमने डिपॉजिट रखा है. तुम्हारी सिंपल लैंग्वेज में, तुम थम्स अप का बॉटल खरीदते हो ग्लास का, वो तुमसे 2 रुपए डिपॉजिट लेते हैं. अब आज के जमाने में सब प्लास्टिक आ गया है, बट अर्लियर देयर यूज्ड टू बी ग्लास बॉटल्स. सो 10 रुपए का थम्स अप है, वो बोलता 2 रुपए डिपॉजिट रखो. पे अस हाउ मच? 12 रुपीज राइट नाउ, एंड 2 रुपीज विल गिव बैक इफ यू गिव द बॉटल बैक टू अस. ठीक है? ये तो ऐसे यहां पर कितने का माल बेचा है? माल कितने का बेचा है? 10 लाख. 10 लाख में डिपॉजिट कितना रखा है? 50,000. चलो देखते हैं. Journal entry for sales. You can go wrong. Type in a chat box. You can absolutely go wrong. I have no problem at all in going wrong.
बोलो मेहता जी, एंट्री बोलो। एंट्री ओके, जर्नल एंट्री में अमाउंट भी होता है, because I know large number of people will just tell headings without amount. Give it a try. आ गया, रुको 2 मिनट रुको, पब्लिक को कैलकुलेट तो करने दो, कैलकुलेशंस करने दो, कुछ कैलकुलेटर लेके आए होगे, आया जूम। कस्टमर अकाउंट डेबिट, अरे कस्टमर अकाउंट डेबिट तो क्रेडिट भी जाना चाहिए ना कहीं, तो मियां है तो बीवी भी लाओ। So I got a few answers. पब्लिक, सो एक आंसर तो खतरनाक है, कस्टमर अकाउंट डेबिट 2 बच्चों का है, कस्टमर अकाउंट डेबिट 9,50,000, क्रेडिट है ही नहीं। अरे गिव इट अ ट्राई यार। बैंक अकाउंट डेबिट, ओके ठीक है, बैंक कस्टमर, क्रेडिट बेसिस, कैश बेसिस, दैट डजंट मैटर। कस्टमर अकाउंट डेबिट 10 lakh to sales account something to output. Customer account debit 9,50,000. Deposit account debit 50,000. Okay. So deposit account debit कर रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड। यहां पर हाँ भाई साहब, आपका आंसर आया था। Okay. So amounts I don't know. Supplier account? We are talking entry in the books of seller. In the books of seller, how can supplier account come up? देखा? ओके, कितने लोगों को एंट्री नहीं आया? ऑनेस्टली नहीं आया सर एंट्री, ऑनेस्टली हाथ ऊपर करो। यहां पर नहीं आ रहा है सर, इट्स ओके यार। देखा, सिंपल ट्रांजैक्शन, कुछ भी मतलब कुछ भी ऐसा मतलब हाइपोथेटिकल होगा ही नहीं ट्रांजैक्शन, ऐसा लिया गया मैंने, प्रैक्टिकल ट्रांजैक्शन लिया। देयर आर सो मेनी गुड्स व्हिच आर सोल्ड वेयर देयर इज अ डिपॉजिट। कॉन्सेप्ट दैट आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस वाज डिपॉजिट इज योर लायबिलिटी, डिपॉजिट इज नॉट योर इनकम, डिपॉजिट इज नॉट योर असेट। कुछ लोगों ने डिपॉजिट अकाउंट को डेबिट किया है, नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं, यहां पर बहुत सारे डिपॉजिट अकाउंट को डेबिट किया है, यहां पर दिखता है सब कुछ, इट्स ओके। अब डिपॉजिट इन द बुक्स ऑफ सेलर, हाउ इट कैन बी एन असेट? इफ यू आर डेबिटिंग अ डिपॉजिट, दैट मींस यू आर शोइंग डिपॉजिट रिसीवेबल, रिसीव हो चुका है बेटा, या रिसीवेबल दिखाना है तुमको। टोटल कितना रिसीवेबल है कस्टमर से? 10 lakh इज रिसीवेबल फ्रॉम अ कस्टमर। तुमको कस्टमर अकाउंट लिखना है, कस्टमर लिखो, नहीं लिखना है तुमको, तुम क्या लिखो? बैंक लिखो ना। इफ इट इज अ कैश सेल इट विल बी बैंक, इफ इट इज अ क्रेडिट सेल इट विल बी कस्टमर। डू यू अग्री? अरे पब्लिक रिस्पॉन्स। 10 lakh, 10 lakh तो मेरे रिसीवेबल है कि नहीं टोटल? आइदर इट इज रिसीवेबल और इट इज रिसीव्ड। अब जो रिसीव किया है उसके बच्चे मेरे को पैदा करने हैं, 2 बच्चे। पहला बच्चा होता है इनकम, दूसरा बच्चा होता है लायबिलिटी। अब यहां पे लायबिलिटी के भी 2 बच्चे हैं,
लायबिलिटी टू गवर्नमेंट एंड लायबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर itself. कैसे? टू सेल्स इज माई इनकम कैनॉट बी 10 लाख रुपीज. माई इनकम इज नॉट 9,50,000. 950 गलत है, मैं लिख रहा हूं सिर्फ. बहुत सारे लोगों ने 950 लिखा. कैसे 950? 10 लाख में से 50,000 रुपया डिपॉजिट का गया. अरे भाई, टू डिपॉजिट ऐसा किया कुछ लोगों ने, गलत है, लिखता हूं सिर्फ 50,000. बॉस, डिपॉजिट इज रिफंडेबल डिपॉजिट. डिपॉजिट रीपेएबल, यू कैन गिव अ नेम. डिपॉजिट रीपेएबल, डिपॉजिट refundable, let it be. Many students have done that. I understand, but where is the GST, boss? Is entire 9,50,000 your income? No. अब आता है सवाल, जीएसटी किस पे कैलकुलेट होना चाहिए, और वहां पर आता है कॉमन सेंस. हाउ कैन देयर बी a GST on deposit amount? Some deposit is like what? A loan. Is it a service? Is a deposit a service? Deposit is kind of what? Money belonging to what? Someone that I kept with myself. It is not my income. It is not the goods or service that I am providing to him. It is my income. It is my liability. Simple. अभी इसके लिए एग्जाम्पल क्या? तुमने कॉलेज में एडमिशन लिया होगा 11th में. कॉलेज में तुमने लाइब्रेरी का फी पे किया होगा और लाइब्रेरी का डिपॉजिट भी पे किया होगा. अगर रिसिट गलती से देखा होगा, सर हमारे बाप ने पैसा पे किया था, हमने थोड़ी भी किया था. रिसिट देखा कभी 11th 12th का कॉलेज के फीस का? तो उसमें लाइब्रेरी का फी भी रहेगा, लाइब्रेरी का डिपॉजिट भी रहेगा. अब कॉलेजेस के लिए इफ इट इज अप्रूव्ड करिकुलम देयर इज नो जीएसटी ऑन इट, बट इन अ प्राइवेट सेक्टर जीएसटी का पार्ट विल कम अप ओनली ऑन व्हाट? अमाउंट अदर देन डिपॉजिट. तो ये 9,50,000 ऐसा अमाउंट है जिस पे जीएसटी आना चाहिए, but 950 is including GST. So if basic amount is, अरे बोलो, if basic amount is, GST कितना होने वाला है? उसमें से कुछ स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा. आपको पे करते टाइम पे एक ही वेबसाइट पे पे करना होता है. गवर्नमेंट इंटरनली डिवाइड्स इट. वी आर नॉट कंसर्न विद इट. फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन कीप 2 लेजर हेड्स. टोटल कितना होता है रे? 118. This 9,50,000 is equal to 118. So how much is 18 equal to? 1 lakh 915 915. Okay, 144,915. What is 144,915 बच्चों? जीएसटी. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस सेल्स पूरा नहीं दिखा सकता मैं. कितना है ये अमाउंट? 8,05,085. 8,05,085. To simply you can say GST payable, deposit refundable. This is my liability. 1,44,915. The concept which I wanted to introduce was this is your income, and don't say this is your expenses. This is your liability, and this is your asset or money received. This is your asset, money received or receivable. So that is a simple transaction. Just a different angle to what you did. You passed the entries, what bank account debit to sales account, but you never focused on the related parts of it. अब मैंने फाउंडेशन में यही एग्जांपल दिया था, सिर्फ विदाउट डिपॉजिट दिया था, इसलिए और ज्यादा लोग गलत गए होंगे आज. कितने लोग करेक्ट आए? हाउ मेनी गॉट इट राइट? देखो 50% ही है यहां पर. जूम पहले मालूम नहीं कितने. जूम पे परसेंटेज अभी वो पोल वगैरह क्रिएट करना पड़ेगा. इट्स मच लोअर. इट्स नॉट इवन 20% राइट नाउ. फाउंडेशन पास हो गए ना? यही तो ट्विस्ट है ना. एंट्री नाउ सीए कोर्स में एंट्री है ही नहीं. क्यों? जब इन्होंने कोर्स लिखा था तब तो जीएसटी नहीं था. कोर्स लिखा था अभी भी तुमने अगर आई डोंट नो देयर इज सम रेफरेंस दैट दे हैव मेड इन द स्टडी मटेरियल, बट इफ यू रिमेंबर मैंने आपको ये जीएसटी का अकाउंटिंग सिखाया होगा फाउंडेशन के अंदर, पक्का सिखाया होगा. इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मैंने सिखाया होगा आपको. जर्नल एंट्रीज भी दिए होगा लिख के. इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, उसका सेट ऑफ कैसे होगा, ये सब है. मतलब it may not be there, but you need to understand the financial accounting. So entire focus of financial accounting was in generating the information required for outsider. But now my focus is different. I don't want to answer a question
Should I remain invested in this company or not? Should I give the loan to this company or not? Should I sell off the shares or not? What is the net profit margin of this company? What is the return on equity of this company? I don't want to answer those kind of questions now. I want to answer different category of questions. See, external users के लिए क्या question था? बैंक है. बैंक का question क्या है? Should we give the loan or not? If you have to give a loan, how much security we should take? Like loan, if you are giving of 1 lakh rupees, how much security should we have? Should we have security of 2 lakh, 1,50,000, 3 lakh? Depends. So questions were very different for external users and questions are totally different for internal user. Now my question is, how should I decide the selling price? Simple question. Or if I have to issue the shares, what should the price of shares? In foundation, you did not ask this question. Company account का एक chapter था. क्या किया तुम लोगों ने? Bank account debit to equity share capital to securities premium. हाँ? Oh no sir, हमने फर्स्ट कॉल किया सर, फिर हमने सेकंड कॉल किया सर, हमने फॉरफ्यूचर भी किया सर. रीशो सॉरी, that is moron, that is like something outdated, but institute still keeps it. Questions भी आया होगा शायद उसके ऊपर, एग्जाम में आया देगा 10 मार्क वगैरह क्वेश्चन. कितना? 20 मार्क, 15 मार्क को आया था. It is simple था. I don't know, I not seen the question. It's outdated concept, but क्या करेंगे हम? फॉरफ्यूचर इशू आपको जिंदगी में कभी रियल लाइफ में मिलेगा नहीं. क्यों? आजकल मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स जो भी इशू होते हैं, entire money is collected along with application. We are in a stone age. We will collect the money in what? Installments, and that too if he doesn't pay, forfeit. हो सकता है, मतलब आई एम नॉट सेइंग इट इज नॉट पॉसिबल. रिलायंस इंडस्ट्रीज ने करके दिखाया था लॉकडाउन के अंदर. रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शेयर्स इश्यू किए थे विच वेयर partly paid and the money was collected in installments. So there could be some persons who are not paid the amount and that's why their shares could have been forfeited. Could have been. But it is not something really interesting. Interesting चीज क्या है? शेयर का इश्यू प्राइस कैसे डिटरमिन करें? How many read fin shots on LIC yesterday? One fellow. Good. One. Zoom पे है कोई? ये हाथ पहले से ऊपर रहता है इनका. Zoom पे एक बार आंसर किया ना तो हाथ नीचे करने का ऑप्शन रहता है उधर. तुमने पढ़ा? Good. How many know fin shots? बोला नहीं था मैंने फाउंडेशन में तुमको फिन शॉट कभी? बोला था. नहीं सर, हमारे फोन में इंस्टाग्राम है, हमको दूसरा वाला शॉट लगता है सर. शॉट ही बोलते हैं उसको, और ऐसा कुछ तो रहता है ना. सो वी एस्पायर दैट सर. आज हम नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो हम वो शॉट को जाएंगे. एप्स के नाम लिखो चलो. एप्स या समथिंग दैट यू हैव टू रीड मैंडेटरीली. और आई give you FinShots. Start up with FinShots is a wonderful initiative created by some people from IIM. अब उसका ऐप रहेगा या उसका न्यूज़लेटर का वेबसाइट पे जाके आप सब्सक्रिप्शन करोगे. एंड्रॉइड पे ऐप भी रह सकता है. यू कैन सब्सक्राइब. पॉडकास्ट भी आता है. शॉर्ट सिंपल. इट्स अ फाइनेंशियल न्यूज इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज विच यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड. एंड इवन इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड, ट्राई टू रीड इट. 5% समझेगा तुमको, 10% समझेगा. आप इतने भी बुद्धू नहीं हो कि आपको कुछ भी नहीं समझेगा. वो तुम्हारा इंस्टाग्राम के रील पे जाके कच्चा बादाम खाने के अलावा इधर, मतलब आई केम टू नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट. आई अंडरस्टूड रील्स डे बिफोर यस्टरडे. देयर इज अ एंड लेट मी टेल यू, इफ द जनरेशन गोज बिहाइंड दिस रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स काइंड ऑफ थिंग्स, वी विल हैव अ डिजास्टर इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी और ऑफ माइंड फॉर प्रोडक्टिव पर्पजेस. क्रिएटिव पर्पजेस ठीक है, वहां पर क्रिएटिविटी बहुत है, बट जस्ट बीइंग क्रिएटिव इज नॉट इनफ. यू हैव टू बैक इट अप विद द रियल स्किल्स. फिन शॉट्स नंबर 1. नंबर 2, मिंट. लाइव मिंट. नहीं तो आप गोली खाओगे मिंट वाला. लाइव मिंट करके एक आता है, अच्छा खासा एप्लीकेशन है, गुड वन दैट यू कैन हैव. ब्लूमबर्ग यूएस वाला, वो पेड रहता है. उसमें गलती से मोबाइल फोन में अगर आपका क्रेडिट कार्ड रहेगा तो 27-28 हजार रुपए जाएगा. तो मोबाइल फोन में आपके लगता नहीं मेरे को आपको क्रेडिट कार्ड होगा आपके पास,
तो परचेस मत करना। उसमें फ्री में जो आता है ना, फ्री में यू गेट 2 आर्टिकल्स टू रीड एंड देयर आर सम शॉर्ट्स दैट यू गेट टू रीड ऑन द ब्लूमबर्ग। सो ओके, मैं आपको फोन कनेक्ट, वी हैव अ फोन, लेट मी कनेक्ट अ फोन। कनेक्ट हो गया? सो ये वाला ऐप है ब्लूमबर्ग। सो इफ यू गो टू द ब्लूमबर्ग, just a second, it gives you free articles. You don't need more than free articles at this stage. So it will give you a perspective of what is going around the world. ये न्यूज आपके नगर सेवक, भाऊंना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव और राहुल गांधी वर्सेस दिस, और योर लैंग्वेज प्रियंका चोपड़ा वर्सेस वो उसका वो कोई तो छोटा बच्चा निक जोनस। सो वो टाइप वाला इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा आपको यहां पर। थोड़ी दुनिया अलग है, बट आप इस दुनिया में जाके देखो, ये दुनिया प्रोडक्टिव है और आप जो चीज करने वाले हो सीए कोर्स में उस चीज से रिलेटेड है। सो हियर इफ यू कम डाउन ऑन द ब्लूमबर्ग, ये जो यहां पर शॉर्ट्स है बुलेटिन, दिस बुलेटिन, इसके बुलेटिन के ऊपर कोई न्यूज पे क्लिक करोगे तो इट विल काउंट योर आर्टिकल। देयर आर 2 आर्टिकल्स दैट यू कैन रीड फ्रीली, बियॉन्ड दैट यू हैव टू मेक अ पेमेंट। देयर इज नो नीड टू मेक अ पेमेंट, जस्ट आपको बुलेट्स पढ़ने रहेगा, फ्रेश स्टोरी था। नाउ व्हाट इज इट? The President Joe Biden and Russian President Vladimir Putin have agreed in principle for a summit according to the statement. So this is something political news. But इसमें financial, अभी right now this is a hot topic which is affecting financial markets. तो अब मेरे को क्या समझना है? रशिया और यूक्रेन का वॉर चालू हो गया, क्या फर्क पड़ेगा? आप बोलेंगे मेरे को क्या फर्क पड़ता है? फर्क कैसे पड़ेगा तुमको? ऑयल प्राइस। रशिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल एंड वी एज अ इंडिया नेशन, वी डोंट हैव ऑयल इन आवर कंट्री. So we have to import oil. So if that oil price goes, like it's about $90 per barrel right now. I'd ask you people to read about the Brent crude and WTI crude. I don't know how many read it. So there are crude oil जो होता है उसके varieties होते हैं. उसका रशिया से कौन से टाइप का क्रूड आता है, उसका proportion कितना है, उससे impact क्या होगा, तो ये आपको समझना पड़ेगा. Then this is all US news. Then you can just keep on loading stories at the bottom. So देखो अभी स्टोरी बदल गया, पॉलिटिकल खत्म हो गया उसका. क्या हो गया वहां पर? As the default risk surrounding the troubled issuers like China's Evergrande Group, it's the largest real estate company in the entire world, rocked the nation's bond market last year and left global investors nursing for the losses. A handful of little known hedge funds swooped in. अब ये बहुत फैंसी लैंग्वेज है, मैं इसको सिंपल करके बोलता हूँ. कुछ बच्चों का हेल्प लेके आई एम गोइंग टू मेक अ यूट्यूब चैनल और एग्जिस्टिंग चैनल को नाम चेंज करके ना, आई एम गोइंग टू put all the financial news that is relevant for a chartered accountancy students in a short form. मेरे को थोड़े स्किल्स नहीं है मेरे पास उस चीज के, तो तू मेरे को हेल्प करने वाला. और कौन था रे? और किसी ने तो हाथ ऊपर किया था उस दिन, 2-3 लोग थे जो वीडियो में हेल्प करके. अब ये न्यूज है ना, ये बहुत काम का न्यूज है. ये क्या बोल रहा है मालूम है? ये बहुत फैंसी लैंग्वेज में लिखा है इसने, तुमको कुछ भी नहीं समझाओगे इसमें. तुमको लगा अरे यार क्या यार ये एलियन जैसा स्पेनिश वगैरह में बात कर रहा है. इट इज बेसिकली सेइंग लास्ट ईयर सितंबर 2020, शायद मैंने आपके ग्रुप पे लिखा था कि नहीं मालूम नहीं था, सितंबर 2021, माय मिस्टेक, एवरग्रांडे, द चाइनाज लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी और लार्जेस्ट इन द एंटायर वर्ल्ड, मेड अ डिफॉल्ट. और उनके स्टॉक प्राइसेस और बॉन्ड की प्राइसेस क्या हो गए? गंदी तरीके से नीचे गिर गए थे. सम पीपल हैव मेड अ ह्यूज मनी आउट ऑफ इट, हेज फंड्स. हाउ? व्हेन द रिस्क वेंट अप, द प्राइस ऑफ द बॉन्ड कम्स डाउन. देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्क एंड द बॉन्ड प्राइस, which you have in the CA course for your information. So the price came way below normal level. So that's where the hedge funds entered in. They bought that particular debentures and they now made a huge amount of money. Instead of writing this in the simple language, now read it. Now read the same news again. As the default risk surrounding, last year default का risk create हुआ था कि ये default करेंगे, but they were bailed out indirectly by the Chinese government. As the default risk surrounded the troubled issuers like Evergrande rocked the nation's bond market last year, that is 2021, and left global investors nursing the losses. क्योंकि जिन लोगों ने पहले ही इन्वेस्ट किया था उनको लॉस हो गया. जिन लोगों ने पहले इन्वेस्ट किया तो बाद में प्राइस नीचे आ गया वो बॉन्ड का डिफॉल्ट की वजह से या रिस्क की वजह से, उनको लॉसेस हो गए. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम लॉट ऑफ अदर इन्वेस्टर्स मेड ह्यूज मनी. व्हाई? दे एंटर्ड व्हेन द बॉन्ड प्राइसेस वेंट. अगर जिन लोगों ने ग्रुप 2 किया है, अगर आपको याद होगा मैंने बंदा बोला था आपको, मैथमेटिशियन था, 1930 में उसने एक थ्योरम लिख के रखा है, मालकाइल. मैंने आपको मनी कंट्रोल पे जाके एक्चुअल में दिखाया भी था. यू शुड व्हेनेवर द इंटरेस्ट रेट्स आर एट द
lowest possible time. You should buy the bonds because when interest rates at the peak and the interest rates come down, bond prices go up. तो कुछ लोगों ने जब ये बॉन्ड प्राइसेस नीचे आए थे तब इंटरेस्ट रेट ऊपर गया, बॉन्ड्स खरीद लिए, और क्या लिखा है उधर? A handful of little known hedge funds swooped in, that is they entered in and they made a money. Now there is something about, look at this. NBA star, I don't know his name, Genius something, has signed a long-term deal with the WhatsApp, the messaging service owned by Meta Platforms, to promote the brand around the world. अब इससे क्या समझ में आता है मालूम है तुमको? खतरनाक एग्जांपल. अभी ये आपको समझा नहीं, आपको लगे क्या है, क्या न्यूज़ है, इसका यूज क्या है? अभी देखो मैं तुमको कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ. How many watch House of Cards? House of Cards. Don't know House of Cards. तुम कौन से टाइप का पब्लिक है? बालाजी, अल्ट बालाजी काइंड ऑफ पब्लिक है क्या? या अपना वो क्या शिल्पा शेट्टी का हस्बैंड? You don't know House of Cards? Huh? You don't know, but you don't watch it. Acha. House of Cards is a political drama. It was based out of UK first. But Kevin Spacey, the actor out there, Netflix had to buy in the entire rights of House of Cards. Netflix is an US entity. In case you don't know Netflix had to buy House of Cards. On what basis they did? अब आपको सीरियल बाय करना है. हम लोग सीरियल बाय करना मतलब क्या करना है? They don't buy the serial on the basis of what is your gross box collections or something like that. They have to find out केविन स्पेसी जो एक्टर है उसके फॉलोअर्स कितने हैं. How many people do interact with the Kevin Spacey? Could be on a Twitter platform, could be on a Facebook, could be on other social media platforms. What kind of merchandise they will buy? What kind of things I could go ahead with and market with the House of Cards? And based on that, I have to do the valuation. So here, I have to learn how to do a valuation of a NBA football, NBA star basketball. NBA का ये कोई तो star होगा. Those people who watch the basketball, Genius something, Genius, whatever the pronunciation, I don't know. But उसका valuation करना है. The way the Netflix acquired House of Cards and Kevin Spacey, in case you know, चलो तुम लोगों को मैं अगली बार शाहरुख खान के एग्जांपल दूंगा. So ये ऐसे न्यूज है, तो आपको ये ब्लूमबर्ग डाउन करना है. तो पहला मैंने क्या बोला आपको, फिन शॉट्स. दूसरा, और ये स्टोरीज आप पढ़ सकते हो, आप इसके अंदर गए. चलो अभी मैं आपको, आज तारीख क्या है, 21 फरवरी ना. लेट मी वेस्ट माय आर्टिकल. आई क्लिक्ड ऑन दिस, यहाँ पे खत्म हो गया मेरा. सो इट आस्क्स यू $0.99 per article, or you can claim the offer and you can pay about 24,900 per year plus GST. तो उसके पर गलती से मत क्लिक करना. डोंट क्लिक ऑन टू इट. आप क्रेडिट कार्ड अगर लिंक्ड रहेगा तो क्या होता है, एप्पल के अंदर वो एप्पल स्टिल आस्क्स कंफर्मेशन, बट जस्ट केयरफुल. नेक्स्ट, बिजनेस लाइन. बिजनेस लाइन करके एक ऐप है. ये देखो, दिख रहा है ऊपर तुमको बिजनेस लाइन. इट्स अ न्यूज़पेपर. उसके अंदर इट्स अ न्यूज़पेपर बाय हिंदू ग्रुप. It has nothing to do with the Hindu religion as such. It is just the name Hindu group. So it is not religious paper. So business line अच्छा newspaper है. Then you can go with the ET. ET mandatory है तुम्हारे लिए. तुमको और क्या समझेगा तुम लोगों को. Then हाँ, तुमको अगर एक बहुत खतरनाक strategic insights चाहिए, Economic Times नहीं, you'll have to go with the McKinsey. This one app, McKinsey Insights. खतरनाक ऐप है. McKinsey Insights. ये थोड़ा हायर लेवल के हो गए. मैकेंजी थोड़ा हायर लेवल है. ईटी इज ओके, फिनशॉट्स इज ओके, मैकेंजी, ब्लूमबर्ग आर लिटिल हायर लेवल. बट आपको दुनिया में क्या चलता है, लेट मी जस्ट शो यू. दोज हु डोंट नो मैकेंजी, even if you get a rank in the CA course, the probability of being hired at a McKinsey is 1%. Even if you get a rank in the chartered accountancy course. I have about 11 students in McKinsey so far. Right on. It's crazy. McKinsey, Boston Consulting Group are the largest consulting groups right now. I'll connect with you some student, like we'll have to find out a time zone, who right now works with the Raghuram Rajan in the United States at Chicago Board of School on some project. I cannot reveal the project out here. So Abhiram Bhalerao karke chartered accountant hai. 2013-14 batch. 2013-14 batch. Huge scope. He worked out with some consulting company earlier, Ben Consulting, McKinsey, Boston Consulting, Ben वगैरह बहुत सारे ग्रुप्स है. ये नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बेसिस पे है.
स्किल्स गैदर करके। तो मैकेंजी पे आप गए ना, आपको बहुत अलग दुनिया एक चल रही है, आपको लगेगा ये क्या है, दिस इज अबाउट फ्यूचर। दे विल नॉट टॉक अबाउट व्हाट इज दिस विल नॉट गिव यू रिपोर्टिंग ऑफ अ न्यूज, व्हाट हैपेंड यस्टरडे और व्हाट इज हैपनिंग इन लास्ट 1 week. दिस इज नॉट न्यूज ऐप. This is if you want a strategic focus to your brain, something, it is, you want to visualize what could be happening in the next, let's say 20 years, 30 years down the line. That visualization, आप बोलेंगे हमें क्या करना है सर? अभी कुछ नहीं करना है तुमको. मैं सिर्फ क्या बोलता हूँ, ये टर्मिनोलॉजी से आप अगर फैमिलियर हो जाओगे ना, आपको समझ में आएगा कि आप जो कर रहे हैं उसका कोई तो वैल्यू है. बहुत सारा चीज आपको मिल जाएगा यहाँ पर. मैकेंजी आप यूज कर सकते हो. और आपको क्या लग सकता है? फिनशॉट्स आपने ले लिया. Then कोटक मनी 5-minute wrap up. एक सेकंड मैं आपको बोलता हूँ. कोटक, एक सेकंड में आपको, I'll show you on iPad this. This is on browser. कोटक सिक्योरिटीज का बहुत खतरनाक चीज है ये. कोटक सिक्योरिटीज मनी मिनट्स. They keep on changing the terminology. 5 things you need to know about cash flows. Okay, so यहां से उसका meaningful minutes, money minutes नहीं, meaningful minutes. Kotak Securities meaningful minutes, and you have to just subscribe for them so it keeps on coming on your email, and don't subscribe too many things. तो आप यहाँ पर गए ना, meaningful minutes के अंदर बहुत सारी चीज आपको मिलेगी. एडवर्टीजमेंट मिलेगा यार, उसको कुछ नहीं कर सकते मैं. सो यू लर्न नाउ. कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर तुमने पढ़ लिया. इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बोला था प्रॉफिट्स आर मैनिपुलेटेड, कैश फ्लो कैनॉट. Hips don't lie, kind of thing. Like that, cash flows don't lie. I'm not interested in Shakira. So, जिनको समझा नहीं, ये गाना है. So, cash flows के बारे में आपको जानना है. Cash flow statement तुमने learn किया. You learned AS3, or some of you could have already learned in the 11th, 12th standard if you are from CBSE or ICSE. So, how do I interpret it? वहां पर meaningful cash flows के ऊपर है. Meaningful minutes आपको मिलेंगे. बहुत सारा चीजें. So, ये चीजें आप करो धीरे धीरे, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा. सो आई वांट टू आंसर ऑल टुगेदर डिफरेंट क्वेश्चंस इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग. लाइक आई टोल्ड यू, हाउ डू आई डिसाइड द सेलिंग प्राइस, हाउ डू आई डिसाइड द इशू प्राइस ऑफ शेयर्स. आई वाज टॉकिंग अबाउट फिनशॉट्स आर्टिकल about deciding the issue price for the LIC. They wrote a wonderful article yesterday on how to do the valuation of LIC, because we not seen such kind of company anywhere in the entire world of that scale and that size, and that is being controlled by the government, and that has such a kind of market share. Almost 75% of the market share is still with the LIC even till today. So how do I value इश्यू प्राइस? आप जर्नल एंट्री बहुत आसानी से पास करोगे LIC के बुक्स में. जर्नल एंट्री सिखा ही नहीं रहे हम. When we go to what? Management accounting. Like this, there are many more questions. We'll deal with the more questions tomorrow.